Hello friends, how are you? So in this particular session, we are going to discuss some important techniques, especially which are utilized for the separation of biomolecules, including proteins. The first technique which we are going to discuss is chromatography. So as name suggests, chromatography is a technique which was first time used by Michael Schwett for the separation of colored pigment. So chroma means color, graphy means it was a sep on a paper. So different colored pigments, they were separated on paper by Michael Schwett and the technique has been named as chromatography. उस टेक्निक को क्रोमेटोग्राफी कहा गया. किसी भी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक की हम बात करें, इन क्रोमेटोग्राफी ऑफन यू विल फाइंड टू डिफरेंट कंपोनेंट्स. हर क्रोमेटोग्राफी में दो कंपोनेंट्स होते हैं. वन ऑफ द कंपोनेंट विच इज सीन इन द क्रोमेटोग्राफी इज, or we can say major component is the stationary phase. Stationary phase is most often solid but may be liquid. So generally it is solid, but in liquid chromatography the stationary phase could be liquid. The stationary phase which is solid, it is either composed of a silica or a cellulose, means it is composed of paper, or it may be composed of some gel beads, or this could be composed of charged beads. Yeah, stationary phase could be composed of affinity beads depending upon the type of chromatography, or it could be composed of hydroxyapatite, or it could be composed of some alkylated silica and so on. Different type of solid, they could serve as a stationary phase. The function of stationary phase is that it is playing important role in differential retardation of migrating molecule on itself. जो स्टेशनरी फेज है उसके ऊपर मॉलिक्यूल्स हैं, दे माइग्रेट, और मॉलिक्यूल्स ए बी सी डिफरेंट मिक्सचर दे आर माइग्रेटिंग. कौन सा मॉलिक्यूल आगे जाएगा, कौन सा मॉलिक्यूल पीछे जाएगा. लो सपोज डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दे आर माइग्रेटिंग. विच मॉलिक्यूल विल मूव टू मोर डिस्टेंस, विच विल मूव टू अ लेसर डिस्टेंस. द मेजर decision is being made by stationary phase. So depending upon the stationary phase, a particular type of solutes they would be retarded more. For example, polar stationary phase है तो polar जो molecules हैं उनका retardation ज़्यादा होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल तेजी से आगे बढ़ते जाएंगे. और अगर नॉन पोलर मोबाइल स्टेशनरी फेज है तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का रिटार्डेशन ज्यादा देखने को मिलेगा. पोरस बीड है तो स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स हैं उनका रिटार्डेशन ज्यादा होगा. चार्ज्ड बीड है तो ओपोजिटली चार्ज मॉलिक्यूल का रिटार्डेशन ज्यादा देखने को मिलेगा. एंड अ सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन ऑल फेज ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज द मोबाइल phase. Mobile phase is most often liquid, but in some cases
it could be gas. For example, gas liquid chromatography, the mobile phase is gas while stationary phase is liquid. The major function, this mobile phase could be polar, it could be non-polar solvent, or a mixture of both. So mobile phase is basically a solvent which may include polar solution or non-polar solution, or even it is maybe mixture of two. The major function of the mobile phase is that it solubilize molecules to be separated. जिन मॉलिक्यूल्स को हमें सेपरेट करना है, उन मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने में के लिए पहले सॉल्यूट का मोबाइल फेज में सॉल्युबलाइज होना जरूरी, तो उनको सॉल्युबलाइज करती है. एंड देन देयर इज अ डिफरेंट, देयर मे बी अ प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशियल solubility, means there may be, there is a case of differential solubility, means there are some components, they are more soluble in mobile phase as compared to the other solids. Then mobile phase, most often it is volatile, that is easily it can be evaporated, and it is responsible for, or it allow solutes to move over stationary phase, स्टेशनरी फेज के ऊपर मूव करने के लिए उनको आगे ड्रैग कराने का काम मोबाइल फेज करती है. सो दीज आर टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनी फॉर्म ऑफ क्रोमेटोग्राफी, दैट इज स्टेशनरी फेज एंड अ मोबाइल फेज. मूविंग फर्दर, द फर्स्ट chromatography, what we are considering is a column chromatography, and in column chromatography we are taking a case of gel filtration chromatography. Column chromatography means the stationary phase is filled in a some column, there is some column like this, और उसके अंदर कुछ पोरस बीड्स हैं वह फिल की हुई होती है. कॉलम में अगर स्टेशनरी फेज में कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहा जाएगा. सो सम पोरस बीड्स, दे आर फिल्ड इन दिस कॉलम. where a sample would be loaded, that is a sample which would be often a mixture of more than one component, it would be loaded over here and it would be allowed to pass through these porous beads. So you load a sample which is a mixture of various components. In gel filtration chromatography, as already mentioned, जैसे मैंने बताया कि जो beads हैं वह porous होती है, means here you can find a pore over somewhere here as well as you can find a pore somewhere here. It is a porous beads, it is composed of porous beads, it could be like this. That is, a sample molecule can enter and can exit through these pores. If you cut a section of this, इसका सेक्शन कट करें तो कुछ इस तरह की कंडीशन आएगी. पोर का सेक्शन को कट करें, you will get a condition somewhat like this. इस तरह की कुछ कंडीशन देखने को मिल सकती है.
you may get some condition like this. That is, the inner phase is an adsorbing phase. That if some molecule enters into the spore, will get retarded, it will take a time to exit, वापस exit होने में time लगेगा. That is, molecules with smaller size are able to enter into pore of gel beads and get retarded. That is, smaller size, they enters into the bead, and if they enter into the bead, they get retarded. But molecules with larger size cannot enter into beads, thus are not retarded and are eluted fast. वो रिटार्ड नहीं होगी, बल्कि वो सबसे पहले एल्यूट आउट होंगे. मतलब यहां पर दो अल्टरनेटिव रास्ते हैं, या तो पोर के अंदर एंटर का, जो बड़ी साइज का, इतनी बड़ी साइज का तो पोर के अंदर एंटर नहीं होकर इस जगह से निकलकर आ सकता है. सो देयर आर टू डिफरेंट वेज by which molecule can migrate. These are, let's say, bead, which are uniformly packed. So small size molecule will enter into this pore, may enter into this pore, and if it is happening, then it will get retarded. And if it is of larger size, let's say this is of this size molecule, it cannot enter into the pore, so it will move like this, it will move like this. And if it move like this, if it is coming like this, then it will travel fast. So जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी को इसीलिए, क्योंकि स्मॉल मॉलिक्यूल अंदर एंटर कर सकते हैं, इसलिए इसको जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है. तो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल पोर से एक्सक्लूड किए जाते हैं, इसलिए इसे मॉलिक्यूलर एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है. सो larger size molecules, they are excluded. If they are excluded, that is, they are not allowed to enter into the pore of gel beads, they will come from the space which is between the gel beads, either through the gel beads, or means through the gel beads means it is entering like this, from it is entering to gel bead and it is coming from this side. Well, in between gel beads means this is gel bead 1 and this is gel bead 2. And there is space between this gel bead, it doesn't has to enter into the pore, they will come through this space which may be there. Okay. So in gel filtration chromatography, the separation profile would be, first, largest molecule that will elute, second, molecule with intermediate size, and finally
thus there would be separation of small size molecule. Gel filtration chromatography is the best approach to assess. It is a best approach to identify the molecular weight of molecule in its नेटिव स्टेट के अंदर, क्योंकि यहां पर हमें प्रोटीन को किसी तरीके का ट्रीटमेंट देना नहीं पड़ता। जो बड़ी साइज का होगा वह सबसे पहले इल्यूट होगा, जो स्मॉल साइज का है वह बाद में इल्यूट आउट होगा। सो हियर व्हाट यू यूज इज दीज पोरस बीड्स, इस तरीके की पोरस बीड्स इस्तेमाल करते हैं, और इसका जो इनर फेस है वह एडजॉर्बिंग फेस है। इनर फेस इज एडजॉर्बिंग फेस। Now these porous beads, gel beads, they are of various different types available in market. For example, some commonly used gel filtration beads include Sulfadex. Again, they comes in different grades: Sulfadex G10, G20, 50, 100, 200, 400 and so on. That depends upon कि what is the range of a molecules to be separated. जितनी ज्यादा बड़ी रेंज के मॉलिक्यूल्स को आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 to 250 को सेपरेट आउट करना है तो यू हैव टू यूटिलाइज या 5 to 600 को सेपरेट आउट करना तो यू हैव टू यूटिलाइज Sulfadex G200, where you can separate the molecules from 5 kilodalton to even 600 kilodalton. So some commonly utilized gels include Sulfadex, Cefacryl, Biogel, Saffrose, and different variants they are available. To separate different size molecules. So we can say the important gel beads include Sulfadex, Cefacryl, Biogel and Saffrose. So this is to be noted from this particular table. Then as suggested that gel bead is porous and the molecule of small size will enter into the pore and the inner face is adsorbing phase, so it will get retarded. So suppose our mixture has two different size of protein. There is a one 25 kilodalton protein and that is protein A, and then there is a protein B of 100 kilodalton. This is loaded over here. A mixture has been loaded over here. Once the sample it moves to gel, we start allowing a solvent to follow. यानी पहले सैंपल को लोड किया, पीछे पीछे मोबाइल फेस जो ऑफन बफर होता है उसको फॉलो कराया। आप देखेंगे कि जो लार्जेस्ट ब्लू कलर वाले जो यहाँ पर मॉलिक्यूल बता रखे हैं, दीज आर ऑफ लार्जर साइज।
So 25 kilodalton, that is our small size, they are somewhere here, while the larger size जो blue color से हमने draw कर रखे हैं, these are the proteins of 100 kilodalton. और आप देख रहे हैं थोड़े टाइम के बाद ही जो 100 किलो डाल्टन वाले मॉलिक्यूल है वह आगे की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, और जो आगे की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं नेक्स्ट पिक्चर के अंदर आप देखेंगे कि वह सबसे यहां तक पहुंच चुके हैं और वह सबसे पहले इल्यूट आउट हो रहे हैं. यानी आप ये भी कह सकते हैं कि जो फ्रैक्शन नंबर 1 में कुछ इल्यूट नहीं हुआ, सेकंड में कुछ नहीं आया, थर्ड ml सिर्फ बफर आया, फोर्थ ml बफर आया, फिफ्थ ml बफर आया, सिक्स्थ ml के ऊपर ब्लू कलर प्रोटीन दैट इज 100 किलो डाल्टन वाला प्रोटीन उसका 6 ml पर पीक आया. किस ट्यूब के अंदर प्रोटीन आ रहा है उसको आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय टेकिंग एन एब्जॉर्बेंस एट 280 nm. जहां कहीं पर भी एब्जॉर्बेंस आ रही है इसका मतलब वहां पर प्रोटीन आ रहा है. इस तरह से इल्यूट आउट करते रहे, वापस आपके पास यहां रेड प्रोटीन यहां पर है, थोड़े टाइम के बाद ये वाली चीज इल्यूट आउट होगी, इस जगह वाली तो कोई वापस प्रोटीन नहीं आएगा. 7th फ्रैक्शन में, 8th फ्रैक्शन, 9th फ्रैक्शन में वापस एक और कोई प्रोटीन का पीक देखने को मिल सकता है. So first protein which will be eluted would be of 100 kilodalton, and then the second protein which is going to be eluted is of 25 kilodalton. So 6 ml पर या 9 ml पर जो पीक आ रहे हैं that is according to the size. सबसे पहले लार्ज प्रोटीन पहले आएगा और स्मॉल प्रोटीन बाद में आएगा. So in this way, in gel permeation chromatography, the proteins or any other biomolecule can be separated based on its size. Then on the molecular size, there is one more technique referred to as dialysis. Basically, dialysis is one of the form of molecular filtration. For example, again let's say there are two different type of protein. Larger size protein, they are of let's say 100 kilodalton, while the small size protein, let's say they are of 25 kilodalton. And there is a dialysis membrane. This dialysis membrane is porous, through which small size porous, that is small size molecules can pass. It is a porous. So you put it in, let's say, a buffered solution. Gradually the small size particles, they will elute out, while the large size will remain within the dialysis membrane. All small size molecules, they are now outside. Small size molecules diffuse out. Large size molecules, they cannot diffuse out because the pore of this membrane is, dialysis membrane is not sufficient enough. इससे larger size वाले molecules pass हो सके. So it is along a diffusion gradient, but only those molecules, they will able to diffuse out of this filtration bag or filtration membrane or filtration pouch, जो कि small size वाले. Then so like gel beads, here also small size molecules, they are able to cross a membrane filter or dialysis membrane. Another technique, a column chromatographic technique, is an ion exchange chromatography. Ion exchange chromatography, it separate biomolecules on basis of charge, or we can say, in other words, on basis of isoelectric point, that is
In ion exchange chromatography, we use charged beads. यहां पर हम charged beads का इस्तेमाल करते हैं. Means they are chemically coupled such that these beads they bear some kind of charge. Charge beads could be positively charged or charge beads could be negatively charged. These beads are referred to as ion exchangers because if the bead is positively charged, they will able to exchange an anion, means they can interact with one anion, and if you raise the concentration of another negatively charged anion, then this first anion would be displaced and second anion can bind to this. So there is exchange of ion. These positively charged beads which bear positive charge, such beads which exchange anion are referred to as anion exchanger beads. Such beads, they are referred to as anion exchanger beads. So there are various examples, but one of the example which we can quote over here is diethyl aminoethyl, that is referred to as a DEAE cellulose. So diethyl aminoethyl group, it is chemically coupled to a cellulose bead, and that's why due to this amino group they bear a positive charge. Similarly, dear friends, beads could be negatively charged. If beads they are negatively charged, they will be able to exchange a positively charged ions. So let's say some positively charged ion is bound to it, and if you raise the concentration of another positively charged molecule whose concentration is more, उसकी concentration ज़्यादा कर दी जाए, तो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये यहाँ पर आकर बाइंड होगा और जो लो कंसंट्रेशन में है वह इस जगह से इल्यूट आउट होना शुरू है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस दे आर रिवर्सिबल इन नेचर. तो सच अ बीड which bears negative charge, thus able to exchange cation, is referred to as cation exchanger beads. Again, variety of cation exchanger beads, they are available. One of the example which could be taken is carboxymethyl, that is referred to as CM cellulose. Here a carboxymethyl is chemically coupled to cellulose, and due to this carboxy group they bear negative charge. When a column is filled with
these anionic exchanger beads, negatively charged beads, the elution profile would be that first to elute would be are those which themselves are positively charged, क्योंकि positively charged पॉजिटिव चार्ज के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, यानी बेसिक molecules because they bear a positive charge. In other words, they have a high isoelectric point. Then the moderate isoelectric point and last to elute, सबसे लास्ट में जो elute होगा that would be the acidic molecule or which are having a low isoelectric point, because acidic molecules they will bear a negative charge. So if there are two or more acidic molecules, then that acidic molecule would be replaced first which is having a higher isoelectric point. Last to elute would be that which is having the lowest isoelectric point. And if you are using cationic exchanger beads, then elution profile would be something like that. The elution profile would be like that. First with a low isoelectric point, and then last which will elute would be which is having a higher isoelectric point. This would be the separation profile. Low isoelectric point means first to elute would be acidic molecules, because these acidic molecules they bear a negative charge. So we were saying that when you are using a cation exchanger bead, the molecule which is going to be first separated with are those which are having a low isoelectric point, because they are acidic, they bear negative charge and the bead itself has a negative charge, इसलिए इनका इल्यूशन सबसे पहले होगा. सबसे लास्ट में वो इल्यूट होंगे जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से वह इस बीड के साथ बाउंड रहेंगे. और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिन्हें पॉजिटिव चार्ज होता है दे आर बेसिक और दे बियर अ पॉजिटिव चार्ज. Different type of ion exchanger beads they are available in market. For example, diethyl aminoethyl cellulose. It is weakly basic. Basicity is due to amino group. As suggested that here there is a dimethyl aminoethyl group is being added. Since it is a positively charged bead, so utilized for the separation of acidic and neutral proteins. CM cellulose is negatively charged beads. They are weakly acidic. Thus, they are used to separate basic and neutral proteins. Phosphocellulose is a strong negative charge, bears a very high negative charge due to a phosphate group. Basically, it retired the basic protein to a very strongly. The reason is that basic protein they bear a positive charge and beads they are negatively charged. Biorex 70 is weakly acidic, also utilized for the separation of basic proteins and amines. Even you can utilize DEAE sulfadex or SV cephorose. In these cases, DEAE sulfadex is bearing a positive charge and methyl sulfonate bearing a negative charge. Besides this, there are sulfadex and sulfurose
beads. Thus, here there may be a combined criteria would be utilized. Separation on basis of charge as well as on basis of size. That is criteria for gel filtration. They would be also utilized because Saffirose and these Saffirose and Saffirdex, they are porous beads. So you have to remember at least one or two example, that is like CM cellulose and DEA cellulose, or you can use another name, that is phosphocellulose or Bio-Rad 70. Then let's say you are having some कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज बीड्स. लेट्स से आपके पास कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज की बीड है, नेगेटिवली चार्ज बीड है, and you are having a sample mixture, and let's say sample contain 3 protein, namely let's say it has a albumin protein whose isoelectric point, let's say, is 5. There is another protein, let's say myoglobin, जिसका isoelectric point 7 के आसपास है, and let's say there is a third protein lysozyme जिसका isoelectric point 11 है. let's say इन प्रोटीन्स को, मिक्सचर को हम लोड करें. सपोज लो सॉल्ट इल्यूशन बफर है जिसका पीएच 5 के आसपास है, हमने पीएच 5 मेंटेन करके रखा. एट पीएच 5 charge on albumin would be 0, charge on myoglobin would be little bit positive, while on lysozyme there would be comparatively more positive. That is, whenever a pH is lesser than pi, the charge on molecule is positive. That's what we have studied. pH 5 is lesser than 7, pH is 11 is also, but pH 5, pi 5 and sorry pH 5 is lesser than 7 and pH 5 is also lesser than 11. So जब pH 5 का बफर डालेंगे तो सबसे पहले जो प्रोटीन इल्यूट आउट होगा, लोड किया, लोड करने के बाद जो सबसे पहले प्रोटीन इल्यूट आउट होगा, दैट वुड बी द प्रोटीन 1. Why 1? Because it do not bear any charge. थोड़ा सा लो सॉल्ट रखा हुआ है, बाइंड ही नहीं हुआ, आसानी से इल्यूट आउट हो गया. पर बीड के साथ अभी भी दिस सेकेंड टाइप ऑफ प्रोटीन और थर्ड टाइप ऑफ प्रोटीन में स्टिल रिमेन बाउंड. अब हमें इस बीड से, जो नेगेटिव चार्ज बीड है, इस बीड से सेकेंड और थर्ड प्रोटीन को भी हटाना है. सेकेंड प्रोटीन यानी मायोग्लोबिन के ऊपर pH 5 पर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, इसलिए वापस pH तो हमने 5 ही रखा, थोड़ा सा सॉल्ट की कंसंट्रेशन को हमने रेज कर दिया. सॉल्ट की कंसंट्रेशन रेज करने का मतलब सराउंडिंग में हमने सोडियम आयन, लेट से उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी. जैसे ही सोडियम आयन की कंसंट्रेशन को हम रेज करेंगे, फर्स्ट प्रोटीन विच विल गेट डिस्प्लेस्ड बाय द सोडियम आयन is that protein which is loosely associated with the beads. और बीड के साथ लूजली कौन सा प्रोटीन एसोसिएट हो रहा है? ए तो इल्यूट आउट या 1 तो इल्यूट आउट हो गया, सेकंड प्रोटीन इज वीकली बाउंड. तो सेकंड प्रोटीन जो मॉडरेट सॉल्ट से इल्यूट आउट होगा, देन अब बीड के ऊपर सभी जगह पर सिर्फ थर्ड प्रोटीन ही बाउंड होगा. और थर्ड प्रोटीन अभी भी इसलिए बाउंड है क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, पर वही pH 5 का बफर, लेकिन इस बार सॉल्ट की कंसंट्रेशन आपने और थोड़ी ज्यादा कर दी, हाई सॉल्ट इल्यूशन बफर लिया. सो लो सॉल्ट का हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ग्रेडियंट बढ़ा जा रहे हैं. इस तरीके से हम इधर एक्सेस पे लिख दिया, हमने क्या कर रहे हैं, सॉल्ट ग्रेडियंट इंक्रीज करते जा रहे हैं.
हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन पर जो सबसे लास्ट में इल्यूट आउट होगा, जिसको मुश्किल से इल्यूट आउट किया जा सकता है, वह प्रोटीन होगा जिसके ऊपर सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, यानी प्रोटीन थर्ड। बट एनी हाउ प्रोटीन थर्ड है, उसको भी इल्यूट आउट कराया जा सकता है। सो फर्स्ट प्रोटीन 1, देन सेकंड, देन थर्ड। First protein which is going to be isolated is of pi5, then a protein which is being isolated is of pi7, and last protein which is going to elute is pi11. So 5, फिर 7, फिर 11. If we are taking a case of CM cellulose, if let's say you are having a protein mixture having a B, C and D proteins, their molecular weight is given, and then there is a isoelectric point Pi is given. The molecular weight of protein A is, let's say, 50 kilodalton, isoelectric point is, let's say, 8. B is of 25 kilodalton, isoelectric point of this is 6, or let's say we use it 9. C molecular weight is of 100 kilodalton, the molecular weight is in kilodalton, and isoelectric point of this is, let's say, 5. This is let's say another protein is of 75 kilodalton, and isoelectric point of this is 7. You are using a Sulfadex G200 for separation. What would be the separation profile? Separation, या हम कह सकते हैं इल्यूशन ऑर्डर क्या होगा? What would be the इल्यूशन ऑर्डर? आपको आंसर करना है। मीन्स सबसे फर्स्ट कौन आएगा, सेकंड कौन आएगा, थर्ड कौन आएगा, और फोर्थ कौन आएगा? दिस इज क्वेश्चन 1. क्वेश्चन सेकंड इज, इफ यू यूज लेट्स से डाइइथाइल अमीनो इथाइल cellulose for separation using salt gradient, तो उस कंडीशन में what would be the elution profile? elution profile क्या होगी? सबसे फर्स्ट पर कौन आएगा, सेकंड पर कौन आएगा, थर्ड पर कौन आएगा, और फोर्थ पर कौन आएगा? दिमाग लगाकर बताएं। So apply your brain, give answer. So what would be the answer? Answer निकला? Answer would be very simple. When you are talking about Sulfadex G200, under such scenario, the separation is based upon size, that is large, separation would be largest to smallest. That is first protein which is going to be separated is, this is would be first, then this would be second, then this would be third, and then this would be fourth. So answer would be C, followed by D, followed by B, and last to get elute is A.
When you are using DEAE cellulose, means amino group will provide a positively charged bead. The separation would be that since beads are positively charged, beads क्योंकि positively charged, तो सबसे पहले जो positively charged molecules होंगे वो elute out सबसे first होंगे, और positively charged means basic means which is having a highest isoelectric point, to separation would be toward a lowest isoelectric point. That is, first to elute would be 9, then 8, then 7, and last to elute would be 5. So order would be, first is protein B, then protein A, then protein D, and last to get separate is protein C. In this way, different proteins, a mixture of protein can be separated. उसको separate out किया जा सकता है. Then moving to another chromatographic technique referred to as affinity chromatography. Affinity chromatography, as name suggests, it depends upon molecular interactions, and especially those molecular interactions which are specific, highly specific. Means molecular interactions like hydrogen bonds, ionic bonds, hydrophobic interactions. These are very much specific. By this approach, we can separate biomolecule in its purest form. यहां पर जो beads इस्तेमाल की जाती है, the beads which are utilized, they have some metallic arm, and ligand associated on this metallic arm. This could be represented like somewhat like this. Now, so we are using, this is a ligand. Ligand basically it interact with a particular substrate. Substrate means, from substrate here we means target molecule which is to be separated, that is referred to as substrate. So depending upon कि आपको क्या चीज प्यूरिफाई करनी है, इस तरीके उसके हिसाब से अलग अलग तरीके के लिगेंड वाली बीड्स इस्तेमाल कर सकते हैं. सो कॉलम के अंदर इस तरीके से खूब सारी बीड्स हैं, बीड्स भरी हुई है. So these are affinity beads filled in a column. So these are affinity beads. Every bead has a metallic arm, and on this
after metallic arm there is some kind of ligand which is associated with them. So we pass a sample molecule that may be mixture of various protein, only that specific protein which is having a high affinity for ligand will be retained in column. बाकी सारी proteins हैं, impurities है, वहां से release हो जाएगी. So what kind of ligand would be added over here? किस तरीके का ligand यहां पर add किया जाएगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हमें किस सबस्ट्रेट को प्यूरिफाई करना, व्हाट सबस्ट्रेट वी हैव टू प्यूरिफाई. फॉर एग्जांपल, if our target is some kind of enzyme, target is some kind of an enzyme, then ligand which must be utilized is its substrate, so that there would be specific enzyme substrate interaction. If your target is some kind of, you can say, epitope, or we can say an antigen of an epitope, then you can utilize antibody as a ligand. And if your target, is, let's say, some antibody, then antigen could be utilized as a ligand. In reverse is also possible. Or your target is, let's say, some sugar or carbohydrate, you can utilize lactines as a ligand. If your target is avidine protein, then as a ligand you can utilize biotin. If your target is, let's say, phosphatidylserine, this is your target, then you can utilize a annexine 5. If your target is some kind of mRNA, then ligand must be a poly T sequence, because assuming that eukaryotic mRNA has a poly A tail. If you have to identify some polyhistidine tag which is on a protein, तो ligand की तरह आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा निकेल को. अगर आपको ग्लूटाथायोन को पहचानना है जो किसी ट्रांसजेनिक प्रोटीन पे आपने ऐड कर रखा है, तो यू कैन यूटिलाइज एन एंजाइम दैट इज रेफर्ड टू एज ग्लूटाथायोन S transferase. This enzyme could be utilized. So these are variety of ligands which could be utilized depending upon कि आपको separate out क्या करना है. So depends upon what actually you want to separate. Different ligands, they could be utilized, and you can customize ligand according to your requirement. So different type of gel beads having a specific ligand attached to them could be ordered, and they can be utilized for a purification purpose. So
note down this is very important, that what are the type of ligand that can be used. That depends upon the target what you want to separate. Then moving further, this is the diagrammatic representation of an affinity chromatography. You can see that there is some solid resin matrix. Then there are specific binding of molecule to this matrix ligand, which is binding to a matrix anchored ligand. So these are the ligands where some specific molecule will bind. So when mixture is loaded through this, it is allowed to pass. All those which do not interact, these impurities, they get elute out. Only those which has an affinity for this ligand, they will be retarded or would be remain bound with the column matrix. So most of the impurities, they have been removed. Last step is often, that is now from this ligand you want, from the same ligand you want that this protein must also get detached. So last step could be that you need that your protein or your molecule of an interest must also get dissociate. So how to dissociate this? For this, what we can do is that these are the ligand which is associated with the matrix. So this is some kind of matrix, and with this matrix, these ligands, they are associated, and the molecule, desired molecule, is bound to these ligands. But at the last, what you can do is you can put a very high concentration of a free ligand in this solution. इसमें free ligand की concentration को बढ़ा दो. तो अब surrounding में अगर free ligand ज़्यादा हुए, so now what you are keeping is more concentration of free ligand. And if concentration of free ligand is high, under such scenario, this protein can dissociate, because if protein get dissociate from its original site, it will bind to the free ligand, and if it is bound to the free ligand, now it cannot bind to any other ligand. अब वो किसी और ligand अगर रास्ते में आ भी जाए, let's say this is another ligand which comes in the on the way, अगर कोई on the way आ भी जाए, तो ये अब इंटरेक्ट नहीं करेगा. सो पहले यहां पर इंटरेक्ट कर रहा था, अब हम ये इंटरेक्ट नहीं कर रहे, बिकॉज it will not interact and it will get elute. तो पहले तो लिगेंड के साथ बाउंड था, वापस हटता तो दूसरी जगह लिगेंड पे बाइंड हो जाता, वापस हटता तीसरी जगह लिगेंड पे बाइंड हो जाता. पर अब क्योंकि सॉल्यूशन में फ्री लिगेंड ज्यादा है, फ्री लिगेंड जैसे ही उसके साथ बाइंड होगा, अब एक्टिव साइट एक बार ऑक्यूपाइड हो गई है और कंसंट्रेशन ऑफ फ्री लिगेंड है वह हमने ज्यादा करके रखी है, तो अब वह प्रोटीन को उस कॉलम से हटाया जा सकता है. दिस मैकेनिज्म इज रेफर्ड टू एज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट हम कैसे कराते हैं? बाय, so in displacement what we do is elution of desired molecule from affinity column by increasing concentration, by increasing the concentration of free ligand in elution buffer. In this way,
they can be eluted. So such an chromatography is referred to as an affinity chromatography. Then moving further, even you can use an adsorption based chromatography. Most ट्रेडिशनल या जो सबसे हिस्टोरिकली क्रोमेटोग्राफीज जो इस्तेमाल की जाती थी, दीज वर एड्सॉर्प्शन बेस्ड chromatography, which were most often utilized for the separation of non-polar substances. इन क्रोमेटोग्राफिक अप्रोचेस में क्या किया जाता है, कॉलम के अंदर कुछ यूनिफॉर्मली कुछ स्टेशनरी फेस मटेरियल पैक कर दिया जाता था. So let's say this is some uniformly packed stationary phase material through which the sample molecules, यहां पर कोई porous या charged beads नहीं है, there is some kind of stationary phase and this stationary phase could be most often जो utilize होता था, this could be you can say alumina, charcoal, diatomaceous earth, even it could be powdered sucrose, finely powdered sucrose, even it could be silica gel. और अब हम क्या करते थे, यहां पर सैंपल को लोड करते हैं. इस जगह पर हमने सपोज सैंपल को लोड किया और सैंपल मॉलिक्यूल्स को इसमें से माइग्रेट होने के लिए आगे की तरफ भेजा. पीछे पीछे हम सैंपल आगे की तरफ मूव कर सके, पीछे पीछे हम क्या फ्लो कराते हैं, तो अलाउ अ फ्लो ऑफ बफर्स, कंटिन्यूस बफर का फ्लो कराते हैं. तो बफर इस तरीके से धीरे 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 आगे की तरफ बढ़ता है और इधर की तरफ से एग्जिट करेगा. डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दे विल माइग्रेट टू द डिफरेंट प्लेसेस. कोई सॉल्यूट यहां तक हो सकता है आगे चला गया, कोई यहां तक आगे पहुंच चुका है, कोई यहां तक आगे माइग्रेट कर रहा है. कहां तक कौन सा सॉल्यूट माइग्रेट होगा वह इस बात पर डिपेंड करता है. सो दिस इज यू कैन से सम काइंड ऑफ स्टेशनरी. सो दे आर सेपरेटेड इन डिफरेंट ट्यूब्स, उनको डिफरेंट ट्यूब्स में सेपरेट आउट किया जा सकता. So there may be component A, there may be component B, there may be component C. There is a differential retardation based on adsorption tendency. Here the most often the mobile phase which is being utilized, जो यहां पर ज्यादातर जगहों पर मोबाइल फेज इस्तेमाल की जाती थी वह, क्योंकि स्टेशनरी फेज पोलार है, जो मोबाइल फेज यहां पर इस्तेमाल की जाती थी दैट इज मोस्ट ऑफन नॉन पोलार और अ मिक्सचर ऑफ पोलार एंड नॉन पोलार. फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूटिलाइज क्लोरोफॉर्म, हेक्सेन, इथाइल ईथर और more than one such combination of mixture. So मोबाइल फेज अलग अलग ट्यूब में कलेक्ट हो रही है, किसी पर्टिकुलर ट्यूब के अंदर हो सकता है कि कोई कंपोनेंट जो डिजायरेबल कंपोनेंट है वह सेपरेट आउट हो रहा है. So in this case the elution profile is that first to elute are most non-polar molecules as they least interact with polar
stationary phase. Adsorption means binding to some surface. और यहाँ पर चाहे एल्यूमिना, चारकोल, डायटोमेसिस, अर्थ को फाइनली पाउडर लिया जाता है, क्योंकि पार्टिकल साइज जितनी छोटी होगी उतना ही सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होगा, और सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा हुआ तो ज्यादा सरफेस मिलेगा इंटरेक्ट करने के लिए. देन hydroxyapatite based chromatography has also been utilized for the separation of proteins. So again a form of column chromatography, but in this column chromatography the material which is now filled is hydroxyapatite. So hydroxyapatite material is being filled. So stationary phase is again polar and composed of hydroxyapatite. This is composed of hydroxyapatite. Hydroxyapatite is basically an insoluble form of calcium phosphate. So you load a mixture of different proteins. जो different proteins हैं उनके मिक्सचर को लोड करते हैं, एंड दे आर अलाउड टू गेट इल्यूट. कुछ प्रोटीन यहां पर चलेंगे, कुछ सो प्रोटीन्स दे विल माइग्रेट टू अ डिफरेंट लोकेशन. जैसे जैसे मोबाइल फेस को आप इधर ही तरफ मूव कराते जाएंगे, so we are collecting, let's say, mobile phase in different vials. So different proteins, they can be separated. Basically, elution buffer which is utilized over here, the buffer which is going to be used over here, elution buffer is phosphate buffer, which gradually replace the protein from the hydroxyapatite. The proteins, they are adsorbed by this hydroxyapatite differentially. So gradually the proteins, they can be separated from this hydroxyapatite chromatography by allowing a run with an elution buffer composed of phosphate, or it is basically a phosphate buffer. Even a simplest chromatographic technique could be paper chromatography, which is most often utilized for the separation of polar molecules. When a mixture or sample of polar molecule is loaded onto paper and it is kept in a solvent, or we can say mobile phase, in paper chromatography, mobile phase travel in forward direction through a capillary action, also carrying the solutes, whether this may be, here you are applying a sample, the solute A migrates to this place, B migrate to this place, C migrate to this place. It carries a solute with itself, while the mobile phase it is carrying, while stationary phase try to retard the path of solids. So we generally say that separation is based upon a partition coefficient. From partition coefficient we mean that what is the amount of that solute adsorbed to the stationary phase and what is the amount of solute which is traveling with a mobile phase. Most often here the mobile phase is non-polar, while the stationary phase is
ऑब्वियसली पोलार सेलुलोज के फाइबर है, पेपर बना हुआ है। तो the stationary phase will try to retard polar molecules, thus concentration in stationary phase would be more, the concentration of mobile phase would be lesser. If so, polar molecules have high partition coefficient for, yeah, during we are talking about the paper chromatography, while non-polar molecules, since these non-polar molecules they will loosely bound to the cellulose paper, मोबाइल फेज उनको और आगे की तरफ solubilize कर कर कैरी फॉरवर्ड करती जाएगी, and that's why non-polar molecules they have high, sorry, they are, because their amount in stationary phase would be lesser while the amount in mobile phase would be higher. So non-polar molecules they will have a lesser partition coefficient. For the identity of any particular solute, we can use another criteria that is referred to as RF value. RF value is a distance traveled by a substance or solute as compared to the distance traveled by solvent front. For example, a solvent has, let's say, traveled to this distance. You have started race from here, the solvent has traveled to this distance, and let's say the distance traveled by solvent is 10 centimeter. The distance traveled by solute is 8 centimeter. The distance traveled by solute, suppose B, is 5 centimeter, and distance traveled by A is, let's say, 3 centimeter. So you can calculate the RF value of substance A. RF value of substance A will come out to be 3 divided by 10, that will come out to be 0.3. Similarly, you can calculate an RF value of B, which will come out to be 5 by 10. RF value for a C could also be calculated, and RF value of C will come out to be 8 by 10, that is 0.8. RF value is constant for a given substance, because जैसे जैसे सॉल्वेंट ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वैसे वैसे सॉल्यूट भी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सेम रेशियो वुड बी मेंटेन्ड. सो RF value is constant. So you can compare the RF value of a paper chromatography under one set with another set, keeping the things in mind that you are utilizing same type of paper for chromatography, same solvent system is being utilized, then only you can compare an RF value. Different amino acids or different molecules, they have a characteristic RF value by which you can identify. So for identification purpose, this RF value could be used. Then paper chromatography is an example of sheet chromatography, where the stationary phase is in form of sheet. It is in two-dimensional sheet, because rest of all chromatographic technique what we have studied, they were a column chromatography. So paper chromatography is a sheet chromatography, and the thin layer chromatography is also a sheet chromatography, where this is the stationary phase. One of the surface is a stationary phase. This is the stationary phase, where you apply a sample and sample molecules, they are carried forward. यहाँ पर आपने sample molecule let's say apply किया, और sample molecule इस तरीके से आगे की तरफ move करेंगे अगर mobile phase को आप travel कराएं तो. So another form of sheet chromatography is TLC, or thin layer chromatography. Mainly it is utilized for the separation of variety of organic molecules. These could be polar organic molecules, or these could be non-polar. In most of biomolecules के separation के लिए TLC का इस्तेमाल किया जाता है.
यहां पर basically there is a sheet and the sheet could be either glass or aluminum or any other physical adsorbent or any other we can say physical sheet where a stationary phase is adsorbed, जिसके ऊपर stationary phase को adsorb किया जाएगा, चाहे वो ग्लास स्लाइड है, चाहे एल्युमिनियम शीट है, उसके ऊपर माइका शीट है, उसके ऊपर इस तरीके से स्टेशनरी फेज को एड्सॉर्ब किया जाएगा। तो 3D व्यू दे देते थोड़ा सा, तो हमने उसके ऊपर शीट के ऊपर स्टेशनरी फेज को एक यूनिफॉर्मली एड्सॉर्ब कर दिया। दिस स्टेशनरी फेज कुड बी सिंपली सिलिका एंड इफ इट इज कंपोज्ड ऑफ सिलिका देन adsorption principle would be applied, that is partition coefficient. This could be composed of ion exchanger beads, yeah, ion exchanger means separation now would be on charge. This could be gel porous, a sheet of porous gel, and if it is sheet of porous gel then the separation would be on size, or some other kind of any kind of you can say physical adsorbent. So anything out of this could be utilized, and again then principle is like a paper chromatography, you apply a sample over here and you put it in a jar chromatographic chamber, and when mobile phase travel in a forward direction it carry a solute particle with itself. You can calculate the partition coefficient, that is what is the amount of solute with a stationary phase as compared to the amount of solute with a mobile phase. So this is a thin layer chromatography. Then you can utilize a reverse phase chromatography, which is most often utilized non-polar substances. So mainly utilized for the separation of non-polar substances, including the proteins which are denatured. It is called as reverse phase because now this time this is the only case where the stationary phase, what you are using is non-polar and often it is liquid. Why it is liquid? Because let's say this is silica particle और silica particle के साथ ये आपने कोई एलिफेटिक चेन जोड़ रखी है। फैटी एसिड्स आप जानते हैं, most of the fatty acids they tend to remain in a liquid state, although it depends upon whether they are saturated or unsaturated. So it is like this, a molecule will pass through this liquid of a fatty acids, molecule को इस liquid में से पास होकर आगे बढ़ना है कॉलम में. So that's why we are saying that here most often the stationary phase is liquid and even the mobile phase what you will use would be also liquid. इस तरीके से कॉलम है जिसमें से आप मूवमेंट की बात कर रहे हैं, इस तरीके की कॉलम. So in most what you use is silica, जहां पर 8 कार्बन की चेन से 18 कार्बन की टेल्स इस्तेमाल कर सकते हैं. सो जैसे से कार्बन की लेंथ बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे कॉलम का हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर है वह इंक्रीज होता जाएगा, हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर है वह इंक्रीज होता है. और इस बार जो मोबाइल फेज इस्तेमाल की जाती है दैट इज कंपैरेटिवली पोलर. सो स्टेशनरी फेज इज नॉन पोलर व्हाइल मोबाइल फेज इन दिस केस इज पोलर.
and that's why, and that is also liquid. So that's why this is often referred to as reverse phase or liquid-liquid chromatography. The elution profile is like that. It would be almost opposite to what happens in a silica based chromatography. First, polar solutes will elute, and last, elution of most non-polar substance. तो एक से ज्यादा अगर नॉन पोलर सब्सटेंस भी है तो सबसे लास्ट में वह नॉन पोलर सब्सटेंस इल्यूट आउट होगा जिसका नॉन पोलर कैरेक्टर सबसे ज्यादा है. जो कन्वेंशनल हाइड्रोफोबिक क्रोमेटोग्राफी है, सॉरी, जो कन्वेंशनल रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी है, उसमें प्रॉब्लम यह है दैट most of proteins get denatured due to high hydrophobicity of stationary phase. So you can say this is a kind of limitation. So limitation of this is most of the protein get denatured, and that's why we say that denatured proteins के लिए इस अप्रोच का इस्तेमाल किया जा सकता है. If you doesn't want that your protein get denatured, तो उस कंडीशन में you can use hydrophobic interaction chromatography. हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन क्रोमेटोग्राफी भी सरफेस हाइड्रोफोबिसिटी के बेसिस पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को या नॉन पोलर सब्सटेंसेस को सेपरेट आउट करता है, लेकिन प्रोटीन को नेटिव स्टेट में, मींस प्रोटीन डू नॉट डीनेचुरेट. प्रोटीन यहां पर डीनेचुरेट नहीं होते. नॉन पोलर सब्सटेंसेस और इन अदर वर्ड्स प्रोटीन्स डीनेचुरेट नहीं होते. ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर जो स्टेशनरी फेज इस्तेमाल की जाती है दैट इज अ वेरी वीक stationary phase is having a very lesser hydrophobicity. It is not sufficient enough कि वह प्रोटीन को डीनेचुरेट कर पाए. The stationary phase mainly include agarose gel substitute with a hydrophobic groups such as octyl or phenyl residues. 12 कार्बन, 14 कार्बन, 16 कार्बन, 20 कार्बन, इतनी लंबी एसिड चेन इस्तेमाल नहीं की जाती. Either they are phenyl residues or octyl chains. So hydrophobicity is limited. And mobile phase which is utilized over here again is like reverse phase chromatography is polar, and the elution order is like hydrophobic chromatography. Elution order is first least non-polar molecule
elutes, and at last most hydrophobic, or we can say non-polar molecule, elutes. This is the elution order. The automated version of a column chromatography is referred to as high performance liquid chromatography, HPLC. High performance liquid chromatography. It doesn't has its own principle. प्रिंसिपल क्या होगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि यहां पर जो कॉलम इस्तेमाल किया गया उसके अंदर किस तरीके का, एचपीएलसी कॉलम में किस तरीके का मटेरियल, पैकिंग मटेरियल इस्तेमाल किया गया। अगर सिलिका इस्तेमाल किया गया है तो एड्सॉर्प्शन के बेसिस पर होगा, पोरस बीड इस्तेमाल किए तो साइज के बेसिस पर, चार्ज बीड यहां पर पैकिंग मटेरियल है तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेसिस पर होना शुरू हो जाएगा, एफिनिटी बीड इस्तेमाल किए तो एफिनिटी के बेसिस पर होगा। आपने नॉन पोलर या एल्काइलेटेड सिलिका इस्तेमाल की है तो रिवर्स फेज वाला प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा। ओनली द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस हैज अ हायर रेजोल्यूशन। बहुत शार्प ढंग से हम डिफरेंट सॉल्यूट्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। बहुत कम समय में डिफरेंट सब्सटेंसेस दे कैन बी सेपरेटेड। बहुत कम अमाउंट है तो भी उनको डिटेक्ट और सॉल्यूट्स को सेपरेट आउट किया जा सकता है, इसलिए वी से इट इज हैज अ हाई सेंसिटिविटी and it has a capacity of automation, that is we can automatize the whole process. In this what happens is, let's say this is a mobile phase, this is mobile phase which is kept in a container. It is taken up by pressure pumps, and pressure pumps which can generate a pressure from 1000 to even 15,000 times of normal atmospheric pressure, which is required to pass it through a densely packed column. There is a densely packed column. नॉर्मल प्रेशर से मोबाइल फेज ट्रेवल नहीं करेगा, बहुत डेंसली पैक्ड स्टेशनरी फेज है, इसलिए मोबाइल फेज को उसमें से पास करने के लिए हमें बहुत ज्यादा प्रेशर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। यू नीड अ हाई प्रेशर। और यहां से फिर मोबाइल फेज वापस इल्यूट आउट हो रही है, और इल्यूट आउट जब कभी हो रही है तो देयर इज सम काइंड ऑफ डिटेक्टर सिस्टम जो ये कंटिन्यूसली डिटेक्ट करता रहता है कि मोबाइल फेज के साथ कोई सॉल्यूट तो नहीं आया। जब तक मोबाइल फेज के साथ कोई सॉल्यूट नहीं आएगा तब तक जो डिटेक्टर है वो एब्जॉर्प्शन को एक कांस्टेंट बताता रहेगा, उसमें टाइम के साथ साथ एब्जॉर्प्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, एक बेस लाइन आएगी। सिर्फ मोबाइल फेज की वजह से जो कुछ भी एब्जॉर्प्शन आनी है वह आएगी। लेकिन अगर हम यहां पर लेट्स से सैंपल मॉलिक्यूल है, सैंपल मॉलिक्यूल को अगर हम यहां पर इंजेक्ट कर दें, बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं चाहिए, ओनली 10 to 20 माइक्रोलीटर ऑफ अ सैंपल मॉलिक्यूल इज सफिशिएंट वेयर द क्वांटिटी कुड बी इन अ पिकोमोल, उसको हम यहां पर इंजेक्ट कर दें। अब मोबाइल फेज इन मॉलिक्यूल्स को जो हमने इंजेक्ट किया उनको आगे की तरफ कैरी फॉरवर्ड करके लेकर जाएगी। जैसे ही वो स्टेशनरी फेज के थ्रू पास होंगे, हो सकता है कुछ सॉल्यूट यहां पर कहीं पर चल रहे हैं, कुछ सॉल्यूट यहां पर चल रहे हैं, कुछ सॉल्यूट और भी आगे यहां तक पहुंच चुके हैं डिटेक्टर सिस्टम पर, यहां से इल्यूट एग्जिट होकर। जब कभी सॉल्यूट यहां पर आएगा, एक पीक आ जाएगा, फिर वापस मोबाइल फेज आएगी, फ्लैट लाइन, फिर वापस कोई सेकंड कंपोनेंट आएगा, वापस पीक आ जाएगा, फिर एक फ्लैट लाइन, फिर और वापस पीक आ जाएगा, एंड सो ऑन। एवरी पीक रिप्रेजेंट अ सम काइंड ऑफ सॉल्यूट। कितने मिनट पर ये पीक आया जिसे हम रिटेंशन टाइम कहते हैं, एंड रिटेंशन टाइम
रिटेंशन टाइम, जिसको हम RT भी लिख सकते हैं। रिटेंशन टाइम बेसिकली इट गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट एन आइडेंटिटी। जो पीक की हाइट है, कितना हाइट आ रहा है पीक, दैट गिव्स यू एन आइडेंटिटी idea about the concentration. So through this HPLC, at the same time you can identify, you can quantify and separate the biomolecule. It has high resolution, very fast, very sensitive, and it can be complete process could be automatized. So these are the different forms of chromatographic techniques. Another important technique for the separation of protein and various other charged molecules is the electrophoresis. So, my dear friends, electrophoresis is a technique where some charged molecules, they are allowed to move or to forest through the gel matrix. So there is some kind of gel matrix. There is some kind of gel matrix. And through this gel matrix, let's say this is a gel matrix which could be of agarose or it could be of polyacrylamide. There is some kind of gel matrix, or even it could be simply a paper, and somewhere you apply a sample. Somewhere you apply the sample molecule. Let's say you apply a sample molecule somewhere here, and this gel is placed between the two electrodes. Let's say there is a kind of one negative electrode on this side and a positive electrode on this side. This is, let's say, negative electrode, or let's say this is a positive electrode and this is negative electrode. And these two electrodes, they are connected so that current may flow. Electrodes आपस में कांटेक्ट में आ सके, इसलिए you have used some kind of electrophoretic buffer. So there is some kind of electrophoretic buffer here which is connecting these two electrodes. So this is some electrophoretic buffer. So again you can draw it somewhat like this, that this is some tray in which this gel is being maintained और उसमें हमने electrophoretic buffer भर रखा. Now the molecules, they start fluorescing, they start moving through these pores of a gel toward an opposite electrode. Some of them, they might migrate to this direction, while some other they may migrate to this direction. Mainly the negatively charged protein or negative charged molecules, they will migrate to this direction, while positively charged molecules, they will start migrating to this direction. So this technique where the molecules, they fluoresce through a gel matrix on application of some external electric field, the technique is referred to as electrophoresis. In electrophoresis, what would be the velocity of migration that depends upon E Q by F? What would be the rate of migration?
that depends upon EQ by F. Or the electrophoretic mobility mu depends upon, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ ला दिया जाए तो mu is electrophoretic mobility. That is how fast the molecules they will migrate in a electric field. That depends upon two important factors. One is Q, that is the charge on molecule, which is to be separated. And another factor is F, that is referred to as frictional force. The electrophoretic mobility is directly proportional to the charge. जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी तेजी से ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेशन होगा. Electrophoretic mobility is inversely proportional to a frictional force. That is, frictional force is a kind of a retardation force. ये एक तरीके का retardation force है. Frictional force basically F depend upon 6 pi neta r, where 6 pi and neta they are constant. In short, the frictional force F mainly depend upon the radius of the migrating molecule. अगर बड़ी साइज का मॉलिक्यूल है, रेडियस स्मॉल भी हो सकता है और रेडियस बड़ी साइज का भी हो सकता है. अगर रेडियस ज्यादा बड़ा है तो पोर में से पास होने में मुश्किल होगी. द रिटार्डेशन वुड बी मोर. इफ रिटार्डेशन इज मोर और फ्रिक्शनल फोर्स इज मोर, द इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी वुड बी लेस. Basically R, in other words, representing the size of molecule. It is representing the size of molecule. In this way, we can say that electrophoretic mobility, that is mu, which depends on Q by F, it depends upon, you can say, charge by mass. These are charge by mass ratio. इसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि साइज इज डिपेंड अपॉन द मास ऑफ मॉलिक्यूल. जिस मॉलिक्यूल का मास ज्यादा होगा उसकी साइज भी कंपेरेटिवली ज्यादा होगी. सो दिस इज प्रिंसिपल बिहाइंड द इलेक्ट्रोफोरेसिस. ओनली वन थिंग इज रिक्वायर्ड, दैट इट इज अ, you can say, separation technique. It is a separation technique for charged molecules. Molecules must be charged, because if Q is 0, it depends on Q, and if Q is 0, then there would be no electrophoretic mobility. If molecule is charged, how far it will move from the origin, that depends upon its native charge, as well as it also depend upon the size of that particular molecule. The simplest form of a electrophoresis could be a paper electrophoresis. Let's say this is a paper. इधर की तरफ भी हमने बफर रखा है, इधर की तरफ भी बफर रखा है, ताकि अब ये पेपर वेट हो जाए. एक तरफ हमने एनोड अप्लाई किया, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और another is, let's say, cathode or negatively charged electrode. So in other words, this end is behaving as a negative end, and this end is going to behave as a positive end. And
in the center you have applied a sample molecule which may bear a mixture of some positive charge, some neutral molecule may be there, some negative charge molecule may be there. As expected, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, molecules they will start migrating toward opposite electrodes, opposite electrode की तरफ वह migrate होना शुरू हो जाएंगे. So let's say this is a point of a sample application. Some molecules they will move toward the positive electrode, while some molecules they might migrate toward the negative electrode. जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव किए वो सारे सारे नेगेटिव आयंस हैं. वी कैन से दैट दीज मोस्ट ऑफन दीज आर सम एसिडिक मॉलिक्यूल्स एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस which has a basic properties or a basic molecules they have migrated to other side. और कुछ मॉलिक्यूल अगर वहीं पर रह रहे हैं, इसका मतलब these would have been a neutral molecule. अब एसिडिक मॉलिक्यूल्स में भी सबसे आगे कौन होगा, सेकंड नंबर पर कौन होगा, थर्ड नंबर पर कौन होगा, व्हाट वुड बी द लोकेशन ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी. इट विल डिपेंड अपॉन बोथ द फैक्टर्स दैट चार्ज ऑन अ मॉलिक्यूल एंड the molecular dimension, that is size of a molecule. Let's say you are having 3 amino acids, a mixture of an amino acids. Let's say you are having one amino acid is alanine, another amino acid is, let's say, aspartic acid, and another amino acid is, let's say, arginine, and you apply these 3 amino acid at this center point, and let's say this is a positive electrode on paper electrophoresis and this is the negative electrode on this side. After some time you find 3 different bands of these amino acids. एक band यहाँ पर कहीं पर है, एक band यहाँ पर कहीं पर, you have applied at this site and some has migrated to this side, some has migrated to this side, and some has remained at the original location. So A, B, C, 3 bands they are being observed. Now you have to identify A, B and C. अब आपको ये पता करना है कि A क्या है, B क्या है और C क्या है. पता कर सकते हैं. तो A क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट हुआ है, इट मींस दिस मस्ट बी सम नेगेटिव चार्ज अमीनो एसिड. वाइल ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ गया है, इसका मतलब दिस मस्ट बी सम पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड. और जो अपनी पोजीशन पर से नहीं हिला, दिस कुड बी सम काइंड ऑफ न्यूट्रल अमीनो एसिड. सो दिस कंक्लूजन कुड बी मेड. द नेगेटिव चार्ज अमीनो एसिड इज आउट ऑफ दिस. नेगेटिव मीन्स acidic amino acid and positive means basic amino acid. So your answer must be A is an acidic amino acid, means it must be an aspartic acid. B is neutral, means it must be an alanine, and C is positive charge basic amino acid, it means it must be an arginine. Okay, so in this way you can locate the position of 3 different amino acids. Then moving further, most common electrophoresis which is utilized for the proteins is gel electrophoresis, where there is some kind of gel matrix. This gel matrix is generally of 2 different types, that is it could be a polyacrylamide gels and agarose gels. These are 2 routinely utilized
gels. Polyacrylamide gel is used for small size molecules, क्योंकि पॉलीएक्रिलामाइड की पोर साइज स्मॉल होती है, सो इट इज मोस्ट ऑफन यूटिलाइज फॉर प्रोटीन। या बहुत ज्यादा स्मॉल साइज के न्यूक्लिक एसिड है, लेट से 1 किलो बेस पेयर से भी कम है, 1000 न्यूक्लियोटाइड से भी कम, 900 या 800 न्यूक्लियोटाइड, तो फिर आपको पॉलीएक्रिलामाइड जेल का इस्तेमाल करना पड़ता है। एग्रोस जेल, इट हैज कंपेरेटिवली, इट फॉर्म्स अ लार्ज पोर्स, दैट्स व्हाई इट इज यूटिलाइज्ड फॉर large size molecules. Example mainly include DNA and RNA. उनके लिए हम एग्रोस जेल का इस्तेमाल करते हैं। So for proteins, most often you utilize a gel of polyacrylamide. Else name suggests polyacrylamide is a polymer. ये एक पॉलीमर है जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक एक्रिलामाइड खुद, इट कंटेन्स एन एक्रिलामाइड, एंड अनदर कंपोनेंट इज NN मिथाइलिन बिस एक्रिलामाइड, जिसको सिंपली बिस एक्रिलामाइड भी कहा जाता है। सो पॉलीएक्रिलामाइड जेल्स, दे हैव अ, द पॉलीएक्रिलामाइड जेल्स, दे हैव अ acrylamide, they have acrylamide plus cross linking agent is bis acrylamide. So you can say that this is involved in formation of cross links, while acrylamide is for formation of linear chains. It is a mixture of two things, that is acrylamide and bisacrylamide. As this diagrammatic representation is given, जैसे कि यहाँ पर diagrammatic representation given है, जैसे ये एक acrylamide है, okay, this is a acrylamide, this is another acrylamide, this is another acrylamide, and so on. This is another acrylamide, linear chain का formation acrylamide कर रहा है, this is also an acrylamide, and so on, this is also an acrylamide, and so on. इनके बीच बीच में क्रॉस लिंक करने का काम is performed by bis acrylamide. So this is a bis acrylamide from this side and cross linking even to this side. This is being cross linked. This is bis acrylamide and it would cross link somewhere on this side. इस साइड में और जो चेन होगी उसके साथ क्रॉस लिंक करेगी. This is the bis acrylamide and it will cross link on this side. So this is again a bis acrylamide. You can see that it is involved in a cross linking. So these are now the pores which has been formed. ये pores बन गए यहाँ पर. These are the pores through which the molecules they will migrate. So these are, you can say, pores. These are the pores through which molecules will migrate. So another representation could be like that, that these are some cross linking agents. इस तरीके से क्रॉस लिंकिंग एजेंट्स को ऐसा कुछ ड्रॉ कर लेते हैं. And these are, let's say, an acrylamide. These are the acrylamides. This is one acrylamide, this is another acrylamide, this is another acrylamide, and so on. So these are, let's say, these are linear chain composed of an acrylamide. So these are the linear structures.
So we can represent it somewhat like this. These are acrylamide, and in between at some places you are getting a, these are bisacrylamide, which are being utilized for a cross linking purpose. So we can represent like this. These are the cross linkers, and the role of cross linker is played by this acrylamide. Okay, in this way acrylamide and bisacrylamide, they form cross links. Here the role of initiator means for this polymerization reaction, the role of initiator is performed by ammonium persulfate, that is APS, and the role of catalyst which initiate this polymerization reaction is performed by TIMADE. So polymer is of acrylamide and bisacrylamide, but this chain reaction is initiated by an initiator, and the role of initiator is performed by ammonium persulfate, and TIMADE is acting like a catalyst. Acrylamide monomers are carcinogenic, but once it gets polymerized into polyacrylamide, now it is not a carcinogenic. Then moving further, this is a acrylamide, or we can say polyacrylamide gel electrophoresis, where we load protein samples. Often the protein samples, they are loaded toward the cathode, toward negative terminus, because majority of the proteins, they are either negative charge, or we introduce a negative charge on proteins, and then these proteins, they migrate and resolve into a different bands. They migrate to a different positions. The separation is based upon the, or we can say electrophoretic mobility, it depends upon the charge as well as also depend on the mass, that is depend upon Q by F. We can write it like this also. In general अगर हम यूनिफॉर्म जेल बनाएं, यूनिफॉर्म जेल if it is produced, इस कंडीशन के अंदर the resolution is not optimum, शार्प बैंड का फॉर्मेशन नहीं होता. यूनिफॉर्म जेल का मतलब यहां से लेकर यहां तक सभी जगह तक हमने सपोज एक ही तरह की जेल बनाई, दैट इज ऑफ 12% पॉलीएक्रिलामाइड जेल बनाई, एक जैसा कंसंट्रेशन हर तरफ रखा है, तो ऐसी जेल पर अगर हम सेपरेशन करें तो बैंड्स काफी थिक आएंगे. रिजोल्यूशन को कुछ हद तक एनहेंस करने के लिए वी कैन गो फॉर अ डिस्क इलेक्ट्रोफोरेसिस. In disk electrophoresis, we make two gels of two different concentrations. Initially, जहां पर हम सैंपल को लोड करते हैं, that is referred to as stacking gel, and then which is of comparatively large pore size, that could be for example 5% acrylamide. And then there is a resolution gel which has appropriate pore size. From appropriate we mean that
as per requirement. That could be 12% or it could be 10% or even 14-16% and so on according to our requirement. नाउ अगर सैंपल यहां पर लोड किया जाए इस तरीके की जेल पर, तो सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल वेदर दे आर लार्ज और स्मॉल दे माइग्रेट अप टू हियर, यहां पर सारे सारे तेजी से पहुंच जाते हैं, कोई डिले नहीं करता. एंड द सैंपल इज लोडेड विद ग्लाइसिन, क्लोरीन एंड वेरियस अदर फैक्टर्स सच दैट there is a formation of very sharp band. The protein band gets stacked between glycine and chlorine. There is a phenomenon referred to as isotachophoresis. But हमारे लिए इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर इतनी बात नहीं है. रेजोल्यूशन जेल के एंड तक पहुंचते पहुंचते यू गेट a stacked band, or we can say a very thin band, and now it is allowed to migrate or it is allowed to enter into a resolution gel, where now these different molecules they separate based upon the charge and mass ratio. So what we do is that in a disc electrophoresis you have a stacking gel which is of lesser concentration, and running gel or resolution gel which is of comparatively higher concentration, and then you load a sample. यहां तक सारे सैंपल साथ में आते हैं और यहां पर आकर स्टैक हो जाते हैं. They get stacked over here, and then as a thin band they start migrating and get separated somewhat like this on a resolution gel depending upon their charge and साइज. स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए पॉलीएक्रिलामाइड जेल का इस्तेमाल किया जाता है, पर लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स के लिए ऑफन वी यूज एग्रोस जेल. दैट इज, अगर आप ये मान लें कि कोई 1 kb का डीएनए फ्रेगमेंट है, 1 किलो बेस पेयर का डीएनए फ्रेगमेंट है, its size would be 1 means it is composed of 1000 base pair, means you can say it is a 1000 into 660 Dalton, because average molecular weight of one base pair is 660. Some book considered it as 650. So whatever it is, 66 0 and 3 0 more. So you will say that it is of 660 किलो डाल्टन. इतना छोटा सा डीएनए का टुकड़ा भी 660 किलो डाल्टन का होगा, जबकि मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन्स आर लेसर देन 1000 किलो डाल्टन. सो we use polyacrylamide gel electrophoresis, and most of nucleic acids are over 1000 किलो डाल्टन. इवन 1 kb का तो 660, तो 2 kb होते ही वह लगभग 1200 किलो डाल्टन का या 1300 किलो डाल्टन का हो जाएगा. So most of nucleic acids they are over 100 किलो डाल्टन. Thus we must use gel with larger pore size, and for this suitable is agarose gels, which may vary from 5% to even 2% concentration depending upon the requirement. That is, if you want to make larger pores, you have to use a lesser concentration of agarose, and if you have to make a smaller pores, then you have to use a comparatively larger concentration of agarose.
For very large nucleic acids, for very large nucleic acids like complete chromosomes, तो वहां पर जो रूटीन एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है वह काम में नहीं आ पाती. Under such scenario, we can utilize a variant form of agarose gel electrophoresis referred to as pulse field gel electrophoresis or orthogonal field gel electrophoresis. Referred to as PFGE or OFGE. For small size nucleic acids, that is for example lesser than 1000 base pair, we use polyacrylamide gels for separation. अगर न्यूक्लिक एसिड भी बहुत स्मॉल साइज की है तो फिर वहां पर पॉलीएक्रिलामाइड जेल का इस्तेमाल करना पड़ेगा. नोट डाउन कर लिया? तो आगे बात करते हैं. अब एक बार जेल के ऊपर प्रोटीन है वह माइग्रेट हो गया तो प्रोटीन कहां पर है हम पता कैसे करें? फॉर दिस वी हैव टू यूज सम काइंड ऑफ स्टेन. मोस्ट कॉमन stain used for protein is Komatsu Brilliant Blue. As its name suggests, you take a gel, you put it in a tray containing the Komatsu Brilliant Blue, you keep on shaking it, then you, after a defined period, you take gel out of this solution and again you de-stain, means keep it in a buffer, so that from the polyacrylamide gel the stain और डी स्टेन शुड अकर. सिर्फ उसी जगह पर ब्लू कलर दिखाई देना चाहिए जहां पर प्रोटीन हो. जहां पर प्रोटीन होगा वहां पर परमानेंट ब्लू कलर होगा, बाकी जगह से स्टेन को हटाया, डी स्टेन कराया जा सकता है. सो इट इज फर्स्ट यू गो फॉर स्टेनिंग एंड डी स्टेनिंग एंड एज अ रिजल्ट यू गेट दीज काइंड ऑफ बैंड्स. इस तरीके के बैंड्स दिखाई दे सकते हैं. यू गेट अ बैंड्स समवॉट लाइक दिस. इस तरीके की प्रोटीन बैंड्स कुड बी विजुअलाइज्ड. Silver stain is often utilized. Silver staining is utilized. It is a very sensitive approach. अगर इवन नैनोग्राम अमाउंट में भी प्रोटीन है, लो अमाउंट में भी प्रोटीन है, तो यू गो फॉर अ सिल्वर स्टेनिंग वेर यू यूटिलाइज अ सिल्वर नाइट्रेट वेर अ ब्राउन कलर्ड बैंड्स दे आर ऑब्जर्व्ड. You can utilize some fluorescent dyes
for staining of protein like Cypro and fluorosamine. These are two fluorescent dye in complex with protein. That is, डाई अलोन अगर यूवी लाइट दें तो कोई फ्लोरोसेंस नहीं आएगी, पर अगर डाई प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन हुआ तो फिर उस जगह से फ्लोरोसेंस आनी शुरू हो जाएगी. सो फ्लोरोसेंस वुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली फ्रॉम द प्लेसेस where there is a protein, because dye protein complex, it when absorb UV light emits a visible light or gives a fluorescence. Another approach besides staining for the detection of a protein could be scintillation counting, in which what is being done is this gel is sliced into various pieces, and from each slice, let's say this is one of the slice, from each slice you can monitor the radiations using some kind of scintillation counter. Radiations would be directly proportional to the protein concentration. But for this, either protein must be radioactive or protein must be complexed with some radioactive probe. या तो प्रोटीन खुद के अंदर कोई रेडियोआइसोटोप आप इस तरीके का प्रोटीन लें जिसमें सल्फर लेट से 35 है, नहीं तो प्रोटीन के साथ कोई किसी ऐसी डाई का इस्तेमाल करें जो कि प्रोटीन के साथ जब कॉम्प्लेक्स करे तो वहां से रेडिएशंस का एमिशन करे. So these are two techniques by which you can detect the position of a protein on a gel. Another approach, a third approach could be immunoblotting. Immunoblotting, you will study that more detail when we are going to study a Western hybridization. So in this approach, what is being done is, first the electrophoresis is performed, then the gel, this is the electrophoretic gel, and on a gel we put a nitrocellulose sheet and various filter papers, and we put in buffer, it start rising, moves through the gel, through the nitrocellulose sheet and to the paper 12. nitrocellulose sheet और paper 12 तक वह मूव करता है. उस दौरान what happens is that जो प्रोटीन जेल में थे वो सारे सारे प्रोटीन कहां पर शिफ्ट हो जाते हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज शीट पर रैप लिखा जाता है. प्रोटीन जेल से निकलकर नाइट्रोसेल्यूलोज शीट तक तो आ सकते हैं, पर उससे और आगे पास नहीं हो सकते क्योंकि नाइट्रोसेल्यूलोज शीट की पोर्ट साइज इतनी लार्ज नहीं है कि उसमें से प्रोटीन माइग्रेट हो सके. बफर कैन माइग्रेट. सो all the proteins which are in a gel, now they have been blotted or they have been transferred to a nitrocellulose sheet. Once protein, they have been transferred to nitrocellulose sheet. Next step, whether a desirable or desired protein is present or not in this gel somewhere. For this, what we can do is, we can use some specific, or we can say primary antibody against the protein of interest. So suppose हमें यहां पर कि कोई एल्बुमिन प्रोटीन है या नहीं पता करना है, तो वी हैव टू यूज एन प्राइमरी एंटीबॉडी अगेंस्ट एन एल्बुमिन. जहां एल्बुमिन प्रोटीन होगा वहां पर प्राइमरी एंटीबॉडी जाकर बाइंड हो जाएगी, वॉशिंग कर एक्सेस प्राइमरी एंटीबॉडी को हटा दी. पर प्राइमरी एंटीबॉडी कहां जाकर बाइंड हुई, ये क्योंकि प्राइमरी एंटीबॉडी खुद तो कोई कलर्ड होती नहीं है. तो अब हम क्या करते हैं, वी यूज अ सेकेंडरी एंटीबॉडी, और सेकेंडरी एंटीबॉडी के लिए ये प्रोटीन है, प्रोटीन के ऊपर प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड होगी और
प्राइमरी एंटीबॉडी जहां कहीं पर भी बाइंड हुई वहां पर सेकेंडरी एंटीबॉडी भी जाकर बाइंड होगी और सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ कोई ना कोई एंजाइम लिंक्ड, दैट इज फॉर, सो यू कैन से प्राइमरी एंटीबॉडी directly recognize protein and secondary antibody recognize primary antibody as antigen and is एंजाइम लिंक्ड, वह एंजाइम के साथ लिंक्ड। सो जहां पर सेकेंडरी एंटीबॉडी होगी, सॉरी प्राइमरी एंटीबॉडी होगी, सेकेंडरी एंटीबॉडी उसको रिकॉग्नाइज कर लेगी और सेकेंडरी एंटीबॉडी एंजाइम के साथ लिंक्ड है। वॉशिंग कर कर हमने एक्स्ट्रा सेकेंडरी एंटीबॉडी हटा दी, पर अब सेकेंडरी एंटीबॉडी कहां पर है? उसके लिए what we do is we utilize some colorless substrate which is being converted into some colored product, और जहां पर colored product होगा वहां पर blue color का लेट से बैंड बन जाए। तो जो हमने एंजाइम इस्तेमाल किया उसका सबस्ट्रेट प्रोवाइड करते हैं जो कि कलर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट, जहां पर कलर्ड बैंड बन गया। अगर जेल पर कहीं पर कलर्ड बैंड बनता है तो इसका मतलब वहां पर डिजायर्ड प्रोटीन है वह प्रेजेंट है। सो यू कैन गो फॉर डायरेक्ट स्टेनिंग, वहां पर सारे ही प्रोटीन पता चलेंगे। रेडियो एक्टिविटी काउंटिंग में भी सारे प्रोटीन पता कर एक साथ पता चलेंगे। इम्यूनोब्लॉटिंग में आप स्पेसिफिक प्रोटीन को जेल में डिटेक्ट कर सकते हैं। नाउ मोस्ट ऑफन प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है दैट इज एसडीएस पेज। SDS is or sodium dodecyl sulfate is a negatively charged detergent. Almost with 1.4 gram of SDS binds to 1 gram of protein. On average, 1 SDS molecule for every 2 amino acids. So let's say these are 2 amino acids, 4 and 6, these are the amino acids, and there would be some R chains. Let's say this is a non-polar R chain, this is again a non-polar R chain, this is again non-polar R chain, and these could be some kind of, you can say, polar R chain, this could be polar R chain, this could be again polar R chain, this could be again polar R chain, this could be again polar R chain. So amino acids have polar R chain as well as amino acids, they have various amino acids, they have a non-polar R chain. So this could be N-terminus and this could be C-terminus of a protein. जहां कहीं पर भी नॉन पोलर आर चेन होती है उनके साथ एसडीएस जाकर बाइंड हो जाता है। इस तरीके से एसडीएस बाइंड हो जाएगा। एसडीएस खुद के पास एक 12 कार्बन की टेल है, डोडेकाइल है, 12 कार्बन तो यहीं से हो गए, और इस तरीके से बाइंड होने के बाद इट प्रोवाइड्स अ नेगेटिव चार्ज सल्फेट ग्रुप की वजह से। Now it will introduce a negative charge on a protein. So what SDS do is, first जो भी प्रोटीन इस तरीके से फोल्डेड फॉर्म में था उसको डीनेचुरेट कर रॉड शेप कन्वर्ट कर देता है। इट गेट कन्वर्ट इनटू अ रॉड शेप, मींस कंप्लीटली डीनेचर्ड। ये एन टर्मिनस हो गया, ये सी टर्मिनस हो गया, और यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर देता है regardless of its original charge. Now all proteins, they become uniformly negative charge. So original charge of protein is
neglected because SDS provide large negative charge. So now all proteins are similarly charged. जितने भी प्रोटीन्स है सभी सिमिलरली चार्ज है, सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज. तो नाउ सेपरेशन विल बी ओनली ऑन मास. सेपरेशन सिर्फ और सिर्फ मास, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी Z बाय, या हम कह सकते हैं Q बाय F के ऊपर डिपेंड करती है. चार्ज तो सबका एक जैसा है, तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स पे डिपेंड करेगा, और फ्रिक्शनल फोर्स बेसिकली डिपेंड करता है साइज या मास के ऊपर. सो SDS denature the protein, convert all protein in a rod shape, provide a uniform negative charge. Thus now separation, instead of charge by mass ratio, the separation in SDS page will occur only on basis of mass. Separation सिर्फ और सिर्फ mass के basis पर होगा. Now you can carry out an SDS page under reducing condition. Reducing condition means in presence of SDS page, sorry, in presence of, let's say, reducing, in presence of some kind of reducing agents like beta mercaptoethanol, in short referred to as beta ME, or dithiophenol, referred to as DTT. And in absence of beta mercaptoethanol or DTT, if you are carrying out SDS page under reducing condition, you can also know you can identify the oligomeric status of protein by comparing data with gel permeation chromatography. Gel permeation chromatography हम पढ़ चुके हैं, that assess molecular weight on basis of native structure, चाहे वो डाइमर है, टेट्रामर है, मोनोमर है, as such it get separate because you do not give any kind of treatment. While in SDS page under reducing condition, first you treat with an SDS, so all non-covalent interactions they are dissociated, and then you treat with a beta mercaptoethanol and dithiophenol. What they will do is they will break disulfide bonds, वह disulfide bonds को ब्रेक करेंगे. Then SDS page could be carried out under non-reducing conditions, and this is often utilized for assessing nature of interactions, that is non-covalent or disulfide bonds by comparing. So this non-reducing conditions, this is, you can say, utilized for assessing nature of interactions, that is non-covalent or disulfide bond, by comparing it with SDS page under reducing conditions. So पहले सब यूनिट्स पता कर लेते हैं,
और फिर अब ये सब यूनिट्स वीक इंटरेक्शन से जुड़े हुए थे या डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए थे, तो उसके लिए हमें एक बार सेम प्रोटीन का एसडीएस पेज अंडर नॉन रिड्यूसिंग कंडीशंस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमने एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन की हमने एसडीएस पेज या इलेक्ट्रोफोरेसिस की, लेट्स से दिस इज द some gel. It is given that there is some protein X with a molecular weight of 100 kilodalton, और ये हमें पता कैसे चला? थ्रू जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी, हमें पता है। यहां पर हमने उस सैंपल को लोड किया। What we have done is SDS page in presence of beta mercaptoethanol, and you get a single band of 50 kilodalton। 50 kilodalton का एक बैंड आता है, तो इसके बेसिस पर what conclusion could be made? क्या हम ये मान लें कि प्रोटीन फ्रैगमेंट हो गया? नहीं, हमने किसी तरीके का प्रोटीन इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए प्रोटीन फ्रैगमेंट वाली बात तो है नहीं। तो फिर क्या हुआ? तो हम कहेंगे कि प्रोटीन 2 सबनेट्स का था। ई सबनेट वाज ऑफ 50 kilodalton and these 2 subnets they get dissociated जब आपने एसडीएस पेज प्लस बीटा मर्केप्टोनॉल का ट्रीटमेंट दिया। पर ये सबनेट्स किस तरीके से आपस में जुड़ी हुई थी? डाइसल्फाइड बॉन्ड से या नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन से? इसके बारे में सोचकर बताएं। तो क्या आंसर आया? तो आंसर शुड बी दैट यू कैन नॉट प्रेडिक्ट, दे मे बी लिंक्ड बाय नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन और इवन दे मे बी लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। लेट्स से इस पजल को चेक करने के लिए हमने क्या किया, इधर की तरफ सेम प्रोटीन को लोड किया, बट एसडीएस पेज इन एब्सेंस ऑफ बीटा मर्केप्टोएथेनॉल, बीटा मर्केप्टोएथेनॉल की एब्सेंस में हमने यहां पर प्रोटीन को लोड किया। अब भी एक ही बैंड बनता है, बट नाउ इट इज ऑफ 100 kilodalton। नाउ व्हाट कंक्लूजन कुड बी मेड अबाउट द सबयूनिट एंड अबाउट द नेचर ऑफ इंटरेक्शन? तो जब कभी भी सबयूनिट को पता करना है तो आप ये डाटा काम में नहीं ले सकते इन एब्सेंस ऑफ बीटा मर्केप्टोनॉल। सबयूनिट के लिए हमेशा हमें एसडीएस पेज अंडर रिड्यूसिंग कंडीशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबयूनिट्स आपने यहां से पता लगी 50 kilodalton का बैंड आ रहा है, मींस देयर आर 2 सबनेट्स। बट इफ देयर आर 2 सबनेट्स, देन व्हाई इन एब्सेंस ऑफ बीटा मर्केप्टोएथेनॉल देयर इज बैंड ऑफ ओनली 100 kilodalton? 100 kilodalton का ही क्यों बैंड आया, वहां 50 का क्यों नहीं आया? देन वी विल से दैट दीज 2 सबनेट्स दे वर लिंक्ड बाय disulfide bond, and since we have not utilized beta mercaptoethanol, इसलिए डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक नहीं हुए, दोनों सबयूनिट प्रोटीन के आपस में एसिड रही और वो एक साथ ही मूव कर रही।
Okay, and let's say if result would have been somewhat like this, ऐसा की बजाय रिजल्ट कुछ इस तरीके का होता कि in both the conditions, whether it is in absence of beta mercaptoethanol or whether it is in presence of beta mercaptoethanol, the band is of 50 kilodalton. What conclusion could be made? You are getting the similar kind of bands. So first you will assess about the subunits. So there are two subunits, and adding a beta mercaptoethanol or not adding a beta mercaptoethanol do not bring any difference. It means no disulfide bond is there. क्योंकि डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं तो बीटा मर्केप्टोनॉल जब नहीं लिया तो डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होंगे. It means you will say that the two subunits, they are interacting only through a non-covalent interactions. Now apply your mind. The same 100 kilodalton protein, if it was loaded at this point, you get a band of 150 kilodalton and another band of 25 kilodalton. But same protein, when it is electrophoresis in SDS phase, in absence of beta mercaptanol or under non-reducing condition, you get a single band of 50 kilodalton. So now what is the oligomeric status? आपको एक तो oligomeric status बताना है, मतलब कितनी सब यूनिट का प्रोटीन है, and second you have to identify nature of interaction, किस तरीके के इंटरेक्शन, यानी प्रोटीन 2 सब यूनिट्स का है, 3 सब यूनिट का, 4 सब यूनिट का, 5 सब यूनिट का, दिमाग लगाकर बताएं. तो पहले सबनेट्स के बारे में जब आपको पता करना है, उस दौरान आपको ये देखना है. इसको देखकर आप ये तो कह ही सकते हैं डेफिनेटली वन सबनेट इज ऑफ 50 किलो डाल्टन एंड देन देयर इज अनदर सबनेट इज ऑफ 25 किलो डाल्टन. ये तो क्लियर है, देयर आर टू टाइप ऑफ सबनेट्स. बट 50 प्लस 25 तो 75 हुए, जबकि प्रोटीन 100 किलो डाल्टन का है. इसका मतलब there is one more subnet which is of a 25 kilo delta. So answer must be that it is composed of 3 subnets. यहां से conclusion निकालोगे तो गलत निकलेगा. If you draw a conclusion in absence of beta mercaptanol, you will say that it is composed of 2 subnets, but really the protein is of 3 subnets. But now the question is that why it is then forming only one band when you are not using a beta mercaptoethanol? Answer must be that out of these 3 subnets, 2 small subnets, they are linked by disulfide bond. They are linked by small subnets are linked by disulfide bonds. Thus, if you don't use a beta mercaptoethanol, these 2 subnets, they behave as one 50 kilodalton protein, and this is also another 50 kilodalton protein. So you are getting a single band. So further, the association over here is a non-covalent. So there is a dimer composed of 2 subunits linked by disulfide bond, and this dimer linked to a monomer by non-covalent interaction. So in this way, you can assess the oligomeric status of a protein as well as the nature of interaction. Then moving further, in case of SDS phase, the separation of molecules is entirely on basis of the size, or we can say molecular weight. Moving to another technique referred to as isoelectric focusing. In isoelectric focusing,
the separation of proteins is based on their isoelectric point. And what is isoelectric point? Pi is pH where net charge on molecule is 0. उसे हम isoelectric point कहते हैं, Pi और isoelectric point. And we know that electrophoretic mobility is depend upon the Q by F, and if Q is 0, electrophoretic mobility will be 0. That is, if the protein finds a pH equivalent to its isoelectric point, its charge will become 0, and if its charge becomes 0, अब चाहे कितनी भी electric field apply करो, protein will get focus, it will not migrate, because for migration charge is important. So in isoelectric focusing, what we do is let's take a strip of an polyacrylamide chain. So this is a polyacrylamide gel electrophoresis. Concentration is very less, it is 5%, means there is a large force, means retardation force or frictional force will not play any important role. But in this isoelectric focusing polyacrylamide gel, the different region of a gel, it contains or it has a different pH. There is a pH gradient from 2 to 12. Let's say here the pH is 2, the pH over here is 4, the pH over here is 6, the pH over here is 8, let's say the pH over here is 10, and pH over here is 12. So in the different regions, there is a different pH. कहीं पर pH 4 है, तो कहीं पर pH 8 है, तो कहीं पर pH 12 है. The different regions, they bear a different pH. Strong acidic condition on one side and a alkaline condition. So this is the complete pH gradient. So this is a pH from 2 to 12. So there is a pH gradient is maintained. Using polyampholytes. Polyampholytes are the organic molecules or molecules which are having various pK values, thus they are having a multiple buffering range. So अलग अलग जगह पर अलग अलग pH, and let's say there are a sample molecule which has 3 protein A, B or C, having, let's say, mass is given to you is 25, this is 50, and let's say this is a 75 kilodalton, and a isoelectric point Pi is given. For this is, let's say, 4, for this is the 7, and this is 9. Or you can take a mass of 2 protein almost equal, 25 to 25. Now, if you apply this protein sample over a lower pH side, let's say pH 2, this pH is lower than 4, even 4, और इतने लोअर पीएच पर सभी प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसलिए इधर की तरफ इलेक्ट्रोड, लोअर पीएच की तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा के रखते ताकि प्रोटीन यहां से ऑपोजिट डायरेक्शन में माइग्रेट हो. और अगर प्रोटीन को यहां पर अप्लाई करते 12 में, तो 12 तो 4 से भी हाई है, 7 से भी हाई है और 9 से भी हाई है. एंड इफ पीएच इज हायर देन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, द चार्ज ऑन प्रोटीन वुड बी नेगेटिव. यहां पर सभी प्रोटीन पर क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, इसलिए हम इधर की तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा कर रखते हैं.
So what we say is positive electrode toward the lower pH and the cathode or negative electrode toward the higher pH. अब प्रोटीन को किधर किसी भी डायरेक्शन से लोड करो, regardless of their size. If you load over here, they will start migrating protein A, B, C. But protein A will not migrate further from this point, क्योंकि यहां पर pH 4 है और प्रोटीन A का आइसोलेटेड पॉइंट 4 है. उस प्रोटीन A चाहे उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना भी कम क्यों ना हो, इससे आगे माइग्रेट नहीं हो, कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, यहां तक तो आ जाएगा, फिर इससे आगे माइग्रेट नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर प्रोटीन A को उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मिल गया. पर प्रोटीन बी और प्रोटीन सी स्टिल दे विल कीप ऑन माइग्रेटिंग, क्योंकि इसका आइसोलेटिव पॉइंट 7 है, सराउंडिंग पीएच 6 है, वहां पर अभी भी उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा. सो प्रोटीन बी सी विल कीप ऑन माइग्रेटिंग एंड सम, let's say another protein will focus over here, and the protein which will focus over here would be protein B, whose isolated point is in between 6 and 8. अब चाहे कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, प्रोटीन बी माइग्रेट नहीं होगा. और इसी तरीके से प्रोटीन सी है, वह लगभग यहां पर कहीं पर जाकर रुक जाएगा. सो यू कैन सी दैट प्रोटीन्स दे आर फोकसिंग ऑन देयर आइसोलेटेड पॉइंट. ए पीएच 4 पर, बी 7 के आसपास, सी है 9 के आसपास, जाकर रुक जाता. दिस इज रेफर्ड टू एज आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग. अगर यहां पर लोड करते तो अभी माइग्रेशन इधर होता, सबसे पहले सी प्रोटीन रुक जाता, क्योंकि pH 9 पर उसका चार्ज 0 था. पर B और A आगे माइग्रेट करते रहते, B यहां पर आकर रुकता, A अभी भी माइग्रेट करता रहता, A यहां पर आकर रुकता. कौन सा प्रोटीन कितनी लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसको किस इलेक्ट्रोड की तरफ अप्लाई किया है. जाकर तो फाइनली उसको वहीं रुकना है जहां पर उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है. सो इन केस ऑफ IEF, regardless of mass, the separation is based on their isoelectric point. Mass do not play any role. So if two proteins, they are of same mass but variable in isolated point, then they could be separated using isoelectric focusing. Then moving to two-dimensional electrophoresis. That is, if let's say there are 4 proteins A, B, C and D. Let's say in a sample has 4 proteins, namely A, B, C and D. The mass on them and charge on them, or we can say isoelectric point. Mass of, let's say hypothetically it is 50, and mass of this is also 50, mass of this is 25, and mass of this is 25 kilodalton. Isoelectric point, suppose for this is 5, for this is 9, this is 5, and this is, let's say, 9. If you carry out an SDS page, तो वहां पर सेपरेशन सिर्फ मास पर होता, और मास पर होने का मतलब है फिर 2 ही बैंड बनते, ए और बी का एक बैंड बनता, सी और डी का एक सेम बैंड होता. अब 50 किलो डेल्टन का जो बैंड है एसडीएस में, फिर ये पता करना पड़ता कि वहां पर सिंगल प्रोटीन है या 2 प्रोटीन है. फॉर दिस यू कैन यूटिलाइज अ टेक्निक्स लाइक स्ट्रिपिंग एंड रीप्रोबिंग. यानी पहले प्रोटीन ए के लिए एंटीबॉडी इस्तेमाल करो, फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी, फिर सिग्नल आ रहा है या नहीं आ रहा है उसे पता करो, फिर वापस कंडीशंस दो कि एंटीबॉडी वहां प्राइमरी एंटीबॉडी हट जाए, फिर प्राइमरी एंटीबॉडी सेकंड प्रोटीन के लिए लो, फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी, फिर सेकंड के लिए सिग्नल आ रहा है नहीं आ रहा है. तो यू हैव टू गो फॉर टू क्रॉस चेक कि वेदर इट इज अ बैंड इज ऑफ सिंगल प्रोटीन और इट इज अ कंपोज ऑफ 2 प्रोटीन, देन यू हैव टू गो फॉर अ स्ट्रिपिंग एंड रीप्रोबिंग. तो उसकी बजाय वी कैन गो फॉर अ 2D पेज. सिमिलरली अगर आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग करते तो ए और सी अपना एक बैंड बनाता और
बी और डी अपना एक बैंड बनाता, क्योंकि उनका आइसोलेटेड पॉइंट सेम। सो 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर बोथ द डायमेंशंस दे आर यूटिलाइज्ड वन बाय वन। जो फर्स्ट डायमेंशन यहां पर इस्तेमाल होगा दैट वुड बी सेपरेशन ऑन बेसिस ऑफ दैट नेटिव चार्ज, वी विल यूटिलाइज एन आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग। सो फर्स्ट सेपरेशन वुड बी ऑन बेसिस ऑफ चार्ज, एंड देन सेकेंड जो डायमेंशन इस्तेमाल किया जाएगा दैट वुड बी ऑफ एसडीएस पेज, वन फॉलोड बाय अनदर, वेयर नाउ द सेपरेशन वुड बी ऑन बेसिस ऑफ mass. Two-dimensional electrophoresis say now you can carry out a complete proteome profiling. Complete proteome profiling है वह की जा सकती। कैसे, उसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो लेट्स से हमने पहले आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग की, यहां पर कहीं पर pH 2 था, लेट्स से यहां पर pH 7 था, यहां पर pH 12 था। प्रोटीन को हमने यहां पर कहीं पर लोड किया, तो ये प्रोटीन्स इस तरीके से इन्होंने दो बैंड बना दिए होंगे, एक कोई प्रोटीन यहां तक गया होगा और कोई दूसरा प्रोटीन यहां तक गया होगा। वापस वो इधर की तरफ हमने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड अप्लाई किया था, इधर की तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड अप्लाई किया। यहां पर कुछ प्रोटीन 5 पर आकर रुक गए, कुछ प्रोटीन 9 पर आकर रुक गए। 5 पर आकर रुकने वाले प्रोटीन ए होगा या सी होगा, और 9 पर आकर रुकने वाला प्रोटीन बी होगा या डी होगा। अब हम एक बार ये सेपरेट हो गए, यहां से इसको स्ट्रिप को यहां से हटाया और उसको अब एसडीएस के सॉल्यूशन में लेट्स से ट्रीट कर दिया, डिप कर दिया। अब हमने उसको एसडीएस से ट्रीट कर दिया, एसडीएस से ट्रीट कर दिया, और एसडीएस से ट्रीट करते ही अब इन प्रोटीन के ऊपर वापस नेगेटिव चार्ज आ गया। प्रोटीन्स नाउ दे बियर अ नेगेटिव चार्ज, वापस नेगेटिव चार्ज आ गया। पहले चार्ज 0 हो गया था, अब नेगेटिव चार्ज आ गया, ओरिजिनल चार्ज लॉस्ट हो गया। और अब हम इसको लोड कर देते हैं ऑन टू अ एसडीएस और नॉर्मल पॉलीएक्रिलामाइड जेल। सपोज ये हमने 12% पेज इस्तेमाल कर ली, और इस बार अब हमने इलेक्ट्रोड के कॉम्बिनेशंस कुछ इस तरीके से लगाए। अब हमने जो नॉर्मल इलेक्ट्रोड के कॉम्बिनेशंस लगाते हैं उस तरीके से इलेक्ट्रोड्स हमने यहां पर अप्लाई कर दिए। एक इलेक्ट्रोड यहां पर अप्लाई कर दिया, एक इलेक्ट्रोड यहां पर अप्लाई कर दिया। दैट इज लेट्स से इधर की तरफ हमने नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इधर की तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। नाउ दीज प्रोटीन्स दे स्टार्ट माइग्रेटिंग इन दिस डायरेक्शन, एंड नाउ द फर्स्ट डायमेंशन वाज on basis of isoelectric point. Now the second dimension which is being utilized is based on the mass. अब हो सकता है एक प्रोटीन यहां तक माइग्रेट हो, दूसरा प्रोटीन यहां तक जाए, यहां से भी दो प्रोटीन में से एक यहां पर हो, एक यहां तक आ जाए। सो ए और सी में से ज्यादा डिस्टेंस कौन माइग्रेट कर पाएगा? जो स्मॉल साइज का है, यानी ये प्रोटीन सी होगा, ये प्रोटीन ए होगा। बी और डी में से जो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाया वह डी है, जो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाया वह बी। इस तरीके से अब एक ही जेल पर चारों ही प्रोटीन, या हम तो कह रहे हैं कंप्लीट प्रोटीन प्रोफाइलिंग इज पॉसिबल, बिकॉज कोई दो प्रोटीन अगर अलग अलग है तो या तो उनके चार्ज में फर्क होगा या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में फर्क होगा। अगर दोनों ही चीजें एक है तो फिर probably दिस इज नॉट अ डिफरेंट प्रोटीन, फिर वो सेम ही प्रोटीन। तो यहां पर हम दो डायमेंशन इस्तेमाल कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। जो पहली डायमेंशन इस्तेमाल की जा रही है यहां पर, दैट इज द फर्स्ट डायमेंशन जो यहां पर इस्तेमाल की जा रही है, दैट इज द चार्ज, दैट इज द फर्स्ट डायमेंशन। एंड देन द सेकंड डायमेंशन व्हिच इज बीइंग यूटिलाइज्ड इज द मास, दैट इज एसडीएस पेज। इस तरीके से जो फाइनल जेल बनी है उसके अंदर हम इसको चार सेक्शन में इस तरीके से समझने के हिसाब से 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो टॉप पर है इसका मतलब वो लार्ज प्रोटीन है, जो बॉटम की तरफ गए हैं वह स्मॉल प्रोटीन है, जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर प्रोटीन है वह
एसिडिक प्रोटीन है लो आइसोलेटिक पॉइंट वाले, और जो राइट हैंड साइड पर गए वह बेसिक प्रोटीन। तो हम आराम से कह सकते हैं दिस इज अ लार्ज एसिडिक प्रोटीन, दिस इज स्मॉल एसिडिक प्रोटीन। ये हाई आइसोलेटिक पॉइंट वाला लार्ज प्रोटीन है, मींस बेसिक प्रोटीन है। ये भी बेसिक प्रोटीन बट ऑफ स्मॉल साइज। और किसी भी तरीके का पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होता है अगर प्रोटीन पर, या तो उसके मास में फर्क आएगा, यानी कोई ग्रुप ऐड होता है तो मास बढ़ जाएगा जिससे इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी पर चेंज आएगा, और कोई ग्रुप हट जाता है तो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी कम हो जाएगी। कोई एसिडिक ग्रुप ऐड होता है तो आइसोलेटिक पॉइंट कम हो जाएगा, कोई बेसिक ग्रुप ऐड होता है तो आइसोलेटिक पॉइंट बढ़ जाएगा, कोई बेसिक ग्रुप न्यूट्रलाइज हो जाता है, हट जाता है, तो वहां पर भी आइसोलेटिक पॉइंट कम हो जाएगा। तो इस कई तरह के पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस भी टू डायमेंशनल पेज से स्टडी किए जा सकते हैं। सो दिस इज अ कंप्लीट प्रोफाइलिंग। यू कैन सी हाउ द two-dimensional gel look like. So first dimension which is utilized is isoelectric focusing, and then you are utilizing SDS page. And as I said, you can divide into two parts, and you can say that these are large acidic proteins, these are large basic proteins, these are, you can say, small acidic protein, and these are small basic proteins. So majority of protein you find that they are neutral, neither they are acidic, their acidic point is around 7, but there are some very small size proteins which are very basic. Similarly, there are very small acidic proteins are there are some large size basic proteins, they are also there. So my dear friend, this is about our topic electrophoresis. So thank you, we'll see you soon. In this session, we are discussing a very small topic, that is protein sequencing. So we have already discussed how we isolate the protein, how we can separate protein, how we can purify protein. So now the point here is how we go for a protein sequencing. From protein sequencing we mean the determination of a primary structure. प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर पता करना कि फर्स्ट अमीनो एसिड प्रोटीन में कौन सा है, फिर सेकंड अमीनो एसिड कौन सा है एन टर्मिनल साइड से, लेट से हम बात कर रहे हैं, फिर थर्ड अमीनो एसिड कौन सा है, फोर्थ अमीनो एसिड एंड सो ऑन, इस तरीके से लास्ट अमीनो एसिड तक। अगर आप एन टर्मिनस से सी टर्मिनस तक कंप्लीट अमीनो एसिड्स की आइडेंटिटी को पता कर लें तो उसे हम कहेंगे प्रोटीन सीक्वेंसिंग और अ प्राइमरी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। प्रोटीन सीक्वेंसिंग के ऊपर जो सबसे पहला सक्सेसफुल एफर्ट किया गया था दैट वाज बाय फ्रेडरिक सेंगर इन 1953। सो लगभग 1953 में ही वाज सक्सेसफुल टू सीक्वेंस 51 amino acid protein referred to as insulin, a important hormone. उसकी उसने पूरी सीक्वेंस कर ली। What he identified is that there are two chains, A chain and B chain, where A chain is composed of 20 amino acids, and final insulin protein has a B chain as well as, and B chain has a 30 amino acids. And he also successfully able to locate the position of disulfide bond, that which cysteine they are basically involved in disulfide bond formation. So how actually we can carry out a protein sequencing? Although फ्रेडरिक सेंगर को इंसुलिन की सीक्वेंस पता करने के लिए लगभग 100 ग्राम के आसपास इंसुलिन प्रोटीन लगा था, लेकिन अब हम इवन नैनोग्राम अमाउंट है, धीरे धीरे चीजें इवोल्व होती गई, एंड इफ नैनोग्राम अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज देयर देन also we can determine sequence.
एंड दैट टू रैपिडली। कहने का मतलब बहुत कम अमाउंट में प्रोटीन है तो भी हम सीक्वेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं, और पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्पीड से। इन जनरल जब हम प्रोटीन सीक्वेंसिंग की बात करते हैं या प्राइमरी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो वी जनरली फोकस ऑन टू डिफरेंट ways of a protein, or we can say peptide sequencing. Protein, yeah, short part of protein could be referred to as peptide sequencing. One is the chemical method, or referred to as an Edmonds degradation method. इस सेशन के अंदर basically we will focus on this particular method for protein sequencing. Although one more method is evolving, that is tandem mass spectroscopy. So in techniques we will study about this tandem mass spectroscopy. Now if you want to sequence a protein, the first step is to prepare the protein for a sequencing. Protein must be it should be in its purified form. There are multiple steps for the preparation of a protein for sequencing. The first step is to identify whether a protein is composed of a single subtype of polypeptide or it is composed of different type of polypeptide chains. Means whether the condition is like this. First, this is some protein having an N terminus and C terminus, or a condition is somewhat like this, that is composed of more than one type of polypeptide chain. So this may be another scenario. It may be having a more than one type of polypeptide chain. So for this, most common way is the end group analysis. N ग्रुप एनालिसिस में या तो एन टर्मिनस पर कौन सा अमीनो एसिड है या सी टर्मिनस पर कौन सा अमीनो एसिड है उसको हम डिटरमाइन करते हैं. इफ द प्रोटीन इज प्योर, देयर इज अ सिंगल काइंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, देन एन टर्मिनस से जो रिलीज्ड अमीनो एसिड होगा दैट वुड बी ऑफ सिंगल काइंड. बट इफ यू आर गेटिंग a two different type of modified amino acid from N terminus, it means one polypeptide cannot have two amino acids. It means there are two different type of polypeptide chain. So in end group analysis, first we go for an N terminal analysis. For N terminal analysis, we use some kind of chemical which specifically interact with an alpha amino group. So both diacetyl chloride and phenyl isothiocyanate both interact with free alpha amino group at N terminus. Diacetyl chloride is fluorescent dye, while the phenyl isothiocyanate, basically it is a visible dye. Both they specifically interact with an alpha amino terminus of a polypeptide chain. Diacetyl chloride, as I have suggested कि diacetyl chloride एक fluorescent dye है. इसका complete name is dimethyl aminonaphthalene sulfonyl chloride. So it is dimethyl aminonaphthalene sulfonyl chloride. So SYL is for sulfonyl, it is a sulfonyl chloride.
जब स्लाइट अल्कलाइन कंडीशन दें, इफ यू प्रोवाइड अ वीक अल्कलाइन कंडीशंस, तो जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन है उसका फ्री अल्फा अमीनो ग्रुप है, उसके साथ आकर इंटरेक्ट करेगा डेंसाइल क्लोराइड, कुछ इस तरीके से। जो कोई भी अमीनो एसिड एन टर्मिनस पर होगा, लेट्स से दिस इज एन सम अमीनो एसिड 1 that will get chemically cross linked with a डेंसाइल क्लोराइड, वह डेंसाइल क्लोराइड के साथ क्रॉस लिंक। अब हम आगे एसिड का ट्रीटमेंट दें, दैट इज इफ वी गिव अ go for an acid hydrolysis, then all amino acids would be released even from the internal places, but only the amino acid which is at the N terminus will show the fluorescence. So you will get various free amino acids, but the amino acid which is at the interior positions, they will not be densylated. The densylated amino acid will give a fluorescence. So we can identify the densylated amino acid by injecting it through an HPLC and comparing with the standards. So हम ये कह सकते हैं कि किनारे पर एन टर्मिनल एंड के ऊपर कौन सा अमीनो एसिड है, क्योंकि जो अमीनो एसिड एन टर्मिनस पर होगा वह डेंसाइलेटेड आएगा। Then admins use another type of chemical referred to as phenyl isothiocyanate. This is also referred to as Admins reagent. This Admins reagent also specifically interact with a free अल्फा अमीनो ग्रुप एट एन टर्मिनस। जो फर्स्ट अमीनो एसिड है एन टर्मिनस पर, जो अमीनो एसिड 1 हम कह सकते हैं, उसका फ्री अमीनो ग्रुप है दैट अटैक ऑन फिनाइल आइसोथायोसाइनेट। सो हियर यू कैन सी दैट वंस अ फिनाइल आइसोथायोसाइनेट covalently it forms a complex with the polypeptide. Now polypeptide could be referred to as phenyl thiocyanate polypeptide or PTC polypeptide. Then in next step what is being done is that this PTC polypeptide, it is cleaved by some anhydrous acid like trifluoroacetic acid. You use some anhydrous acid like trifluoroacetic acid. You give a controlled treatment that now the terminal peptide bond must be cleaved. All जो internal peptide bond है वह क्लीव नहीं होंगे। जो डेंसाइल वाला मेथड था उसके अंदर हमने एसिड हाइड्रोलाइसिस की तो सभी पेप्टाइड बॉन्ड क्लीव हो गए थे। यहाँ पर हमें सभी पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड क्लीव नहीं कर रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड का सिर्फ एन टर्मिनल साइड में, स्पेशली जहां पर पीटीसी जुड़ा हुआ या फिनाइल थायोसाइनेट जुड़ा हुआ है उस अमीनो एसिड के बाद कट लगाया जाएगा या क्लीवेज कराया जाता है बाय एन एनहाइड्रस ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। तो कुल मिलाकर अब जो ओरिजिनल पॉलीपेप्टाइड है उसमें सेकंड अमीनो एसिड किनारे पर आ गया। नाउ द सेकंड अमीनो एसिड इज एट द टर्मिनस। वॉशिंग करने पर मींस ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड ट्रीटमेंट देने के बाद वॉशिंग करने पर देयर इज अ रिलीज ऑफ थायोएजिलोन डेरिवेटिव। अमीनो एसिड थर्ड जिसका पेप्टाइड अगेन इट कुड बी ट्रीटेड विद फिनाइल आइसोथायोसाइनेट। इस तरीके से हम सेकंड साइकिल की तरफ बढ़ सकते हैं। फर्स्ट साइकिल के अंदर एक अमीनो एसिड 1 है या अमीनो एसिड 1 का थायोएजिलोन डेरिवेटिव रिलीज हुआ।
थायोएजिलॉन डेरिवेटिव को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में रखने पर, सो स्लाइट एसिडिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में रखने पर दिस thiazolinon derivative is converted into a stable form referred to as phenyl thiodentoin derivative. So now you are getting a stable thiodentoin derivative of phenyl thiodentoin derivative of an amino acid which was present at the N terminus. ये HPLC में इंजेक्ट किया जाता है और HPLC में इंजेक्ट कर रिटेंशन टाइम के बेसिस पर इस अमीनो एसिड 1 को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है. सो दिस इज बेसिकली द एडमेंस डिग्रेडेशन मेथड. सो फर्स्ट स्टेप में देयर इज एन एडिशन ऑफ ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड. सेकंड स्टेप में जो मॉडिफाइड अमीनो एसिड ऑफ एन टर्मिनस को कट कर बाहर निकाला और जो अमीनो एसिड थायोडेंटोन डेरिवेटिव बाहर निकल कर आया उसको हम HPLC में इंजेक्ट कर आइडेंटिफाई कर लेते हैं. सेकंड साइकिल में वापस नाउ सेकंड अमीनो एसिड इट इज एट द एन टर्मिनस. इट इज अगेन ट्रीटेड विथ द फिनाइल आइसोथायोसाइनेट एंड द सेकंड साइकिल प्रोसेस. इस तरीके से अमीनो एसिड 1 अमीनो एसिड 2, पहले अमीनो एसिड 1 के बारे में पता चलेगा, सेकंड साइकिल के बाद अमीनो एसिड 2 के बारे में पता चलेगा, थर्ड साइकिल के बाद अमीनो एसिड 3 के बारे में पता चलेगा एंड सो ऑन. इस तरीके से हम एक एक कर सब अमीनो एसिड के बारे में पता कर लेते हैं. सो दिस इज अ बेसिस ऑफ एन एडवांस्ड डिग्रेडेशन मेथड. सो एन टर्मिनल एनालिसिस या तो आप डेंसाइल क्लोराइड से कर सकते हैं या फिनाइल आइसोथायोसाइनेट से कर सकते हैं. उसके अलावा भी कई सारे केमिकल जैसे डेप्साइल क्लोराइड है उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है. सो HPLC में सिर्फ एक प्योर सपोज मिथ्योनिन थायोडेंटिव डेरिवेटिव आता है तो उससे क्या क्लियर होता है? That is there is only one polypeptide chain which is having methionine at its terminus. 1 मोल पॉलीपेप्टाइड की हाइड्रोलाइसिस करने पर आपके पास 1 मोल मिथ्योनिन भी आता है और 1 मोल ट्रिप्टोफैन भी आता है. तो क्या कंक्लूजन निकलेगा? फिर हम कहेंगे 2 अमीनो एसिड तब आ सकते हैं जब 2 डिफरेंट तरीके की पॉलीपेप्टाइड चेन हो, बिकॉज डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन दे विल बियर अ डिफरेंट काइंड ऑफ अमीनो एसिड एट द एन टर्मिनस. इसी तरीके से हम सी टर्मिनल एनालिसिस भी कर सकते हैं. सी टर्मिनल एनालिसिस के लिए वी कैन यूटिलाइज सम काइंड ऑफ एक्सोपेप्टाइडेज. एक्सोपेप्टाइडेज जो कि सी टर्मिनस से अमीनो एसिड को रिमूव करेंगे उन्हें कार्बोक्सी पेप्टाइडेज कहता है. ऑल्दो एन टर्मिनल जगह से भी आप अमीनो एसिड्स को एंजाइमेटिकली रिमूव कर सकते हैं केमिकली की बजाय बाय यूजिंग एन एंजाइम अमीनो पेप्टाइडेज. So the function of this carboxypeptidase would be to remove, so let's say this is a polypeptide chain having NH2 side on this, CH side on this. जो टर्मिनल अमीनो एसिड है उस टर्मिनल अमीनो एसिड को यहां से हटाने का काम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज करेगा, टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करने का. So these are referred to as exopeptidase or exoprotease. How this is being done? It could be represented in this diagram. Let's say this is an nth amino acid, this is n-1 amino acid, this is n-2 amino acid. अगर आप कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का ट्रीटमेंट देते हैं तो जो किनारे पर अमीनो एसिड है वह रिलीज होकर बाहर आ जाता है और जो सी टर्मिनस से अमीनो एसिड रिलीज होकर बाहर की तरफ आया है इसको HPLC में इंजेक्ट कर हम स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके, सो सी टर्मिनल एनालिसिस के लिए मोस्ट ऑफन वी कैन यूटिलाइज एन एक्सो
N-terminal exopeptidase referred to as carboxypeptidase. Now the different carboxypeptidase, they have a different specificity that they cut at certain specific site. Almost all enzymes, they are stereospecific and substrate specific. For example, carboxypeptidase A, which is obtained from bovine pancreas, it cut at or can remove the amino acid from an N position. Suppose this is N-1 and this is NaNCOH. It can remove this peptide bond. It can remove this peptide bond. But at this position, that is referred to as N position, it should not be arginine and lysine or प्रोलीन. तो यहां पर प्रोलीन नहीं होना चाहिए, ना तो यहां प्रोलीन होना चाहिए और न ही यहां पर भी प्रोलीन होना चाहिए. दिस शुड ऑल्सो नॉट बी अ प्रोलीन. So this should not be also proline, and this should not be lysine, arginine और प्रोलीन. इन तीनों में से कुछ नहीं होना चाहिए. अगर किनारे पर लाइसिन, आर्जिनिन, प्रोलीन है तो फिर कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए काम नहीं आएगा. पर फ्रेंड्स उस जगह पर कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बी का इस्तेमाल किया जा सकता है. कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बी बोविन पेनक्रियास से ये भी ऑब्टेन होता है. ये पॉलीपेप्टाइड चेन के सी टर्मिनस से अगर किनारे पर, सपोज ये AN-1 है, किनारे पर अगर लाइसिन या आर्जिनिन अमीनो एसिड है, फिर सी टर्मिनस आ गया उसका. अगर लाइसिन या आर्जिनिन को हटाना है, यानी बेसिक अमीनो एसिड को हटाना है, तो दैट इज डन बाय कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बी. अगर कोई काम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए से नहीं हो रहा है तो वहां पर फिर कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बी है अपना रोल प्ले कर सकता है. ध्यान रखें कि ये कार्बोक्सीपेप्टाइडेज हो या चाहे अमीनो पेप्टाइडेज हो, तभी काम कर सकते हैं जब स्ट्रक्चर लीनियर हो, तभी वह किनारे से अमीनो एसिड को हटा सकते हैं. अगर साइक्लिक है तो फिर दीज एक्सोप्रोटीज या एक्सोपेप्टाइडेज है वह काम नहीं कर पाएंगे. कार्बोक्सीपेप्टाइडेज सी, ये लगभग सी टर्मिनस से हर अमीनो एसिड को हटा देते हैं, लेकिन ये pH 7 पर काम नहीं करते बल्कि दे वर्क एट pH 3.5. इसी तरह से कार्बोक्सीपेप्टाइडेज वाई है, वह भी सी टर्मिनस से सभी तरह के अमीनो एसिड को हटा देते हैं, बस सिर्फ टर्मिनस पर ग्लाइसिन नहीं होना चाहिए. अगर टर्मिनस पर ग्लाइसिन है तो फिर कार्बोक्सीपेप्टाइडेज वाई काम नहीं करेंगे. इसी तरीके से there is two important aminopeptidase. One is leucine aminopeptidase, which can remove any amino acid from an N-terminus. leucine aminopeptidase यहां से अमीनो एसिड को हटाएगा. बस वापस वही बात है कि पहला अमीनो एसिड प्रोलीन नहीं होना चाहिए, जबकि aminopeptidase M, it can remove any N-terminal amino acid. तो इस तरीके से different carboxypeptidase or an aminopeptidase, they have different specificity. जब का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता प्रोटीन सीक्वेंसिंग करने के लिए? सीक्वेंसिंग सी टर्मिनस से एन टर्मिनस पता चल जाएगी कि एक एक कर अमीनो एसिड, ये कोई प्रोटीन है, उस प्रोटीन में से एक एक कर आप अमीनो एसिड को हटाते जाएं. ये सी टर्मिनस हो गया और ये एन टर्मिनस हुआ.
पहले इसको हटाओ, इसको आइडेंटिफाई कर लो कि फर्स्ट कौन सा है, फिर इसको हटाओ, फिर उसको आइडेंटिफाई कर दो एंड सो ऑन। जब एन टर्मिनस साइड से सीक्वेंसिंग की जा सकती है, एक एक अमीनो एसिड को हटाकर उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, तो फिर सी टर्मिनस से सीक्वेंसिंग क्यों पॉसिबल नहीं है? So the reason for this is that these carboxypeptides do not remove all C terminal amino acid by same specificity. कुछ अमीनो एसिड्स पर कार्बोक्सीपेप्टाइडेज तेजी से काम करता है, कुछ दूसरे तरीके की अमीनो एसिड अगर सी टर्मिनस पर आया है तो हो सकता है कि वो उतना एफिशिएंटली रिकॉग्नाइज कर वहां से क्लीवेज ना करे। और कुछ अमीनो एसिड्स अगर प्रेजेंट हो तो फिर सी टर्मिनस पर तो फिर कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, पर्टिकुलर तरीके कार्बोक्सीपेप्टाइडेज इस्तेमाल भी नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए will not able to remove an amino acid from C terminus if a C terminus has lysine or arginine or proline. And obviously cyclic है तो फिर तो न तो कार्बोक्सीपेप्टाइड इस्तेमाल कर सकते हैं एंड न ही अमीनो पेप्टाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो बात हमने कही है उसको यहां पर ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड इज कि कोई पेप्टाइड लेट्स से सीरीन, ल्यूसीन, टायरोसिन है तो सबसे पहले कार्बोक्सीपेप्टाइड टायरोसिन को हटाना चाहिए, उसके कुछ गैप के बाद फिर ल्यूसीन और उस गैप कुछ और गैप के बाद सीरीन आना चाहिए। तो सबसे पहले आया वह सी टर्मिनस पर था, फिर सी n-1 पर, फिर n-2 पर, ऐसे पता किया जा सकता है। बट व्हाट इज ऑब्जर्व्ड, ये बात तो एक्सपेक्टेड हुई। What is observed is that the affinity of the carboxypeptides for serine is very low, while the affinity for or specificity for carboxypeptides for tyrosine is very high. Result is that serine को निकलने में ज्यादा टाइम लगता है और सीरीन और टायरोसिन के बीच में, सीरीन और टायरोसिन के बीच में जो गैप होना चाहिए टाइम ड्यूरेशन का, उतना गैप नहीं होगा। किनारे से सीरीन हटा, इमीडिएटली टायरोसिन भी हट जाता है और यानी सीरीन और टायरोसिन दोनों एक साथ आपको मिलना शुरू हो जाते हैं और अब आप यहां अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि सी टर्मिनस से सीरीन रिलीज हुआ या टायरोसिन रिलीज हुआ। ल्यूसीन के अंदर फिर उसको रिकॉग्नाइज करने में काफी टाइम लगा रहा है। सो द एफिनिटी फॉर सम टाइप ऑफ amino acid at C terminus is more and for other amino acid this is comparatively lesser. So that's why we cannot rely on carboxypeptidase for our protein sequencing. एंजाइम्स के अलावा सी टर्मिनस से केमिकली भी अमीनो एसिड को हटाया जा सकता है। The most common process which is utilized for removal of a C terminal of amino acid by chemical is referred to as hydrogenolysis. In hydrogenolysis, we use a hydrazine at 90 degrees centigrade for treatment is for prolonged duration. You can say almost around 1 to 4 days के लिए लगातार आपको हीट करना हाइड्राजीन की प्रेजेंस। So let's say this is the hydrazine and this is a polypeptide and this is an amino acid which is at the nth position.
हाइड्राजीन की प्रेजेंस में 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर माइल्ड एसिडिक कंडीशंस में या माइल्ड एसिडिक एक्सचेंज रेजिन के प्रेजेंस में माइल्ड एक्सचेंज रेजिन एक्ट एज अ कैटलिस्ट. सो व्हाट वी आर एडिंग एज अ कैटलिस्ट? एसिडिक आयन एक्सचेंज रेजिन. ऐसा करने पर हाइड्रा, पहली बात तो जितने भी इंटरनल पोजीशन है वहां से बॉन्ड है वह क्लीव होता है, और जो कार्बोक्सिल ग्रुप पेप्टाइड बॉन्ड में इन्वॉल्व था वह सारे के सारे उन सब के ऊपर हाइड्राजीन आकर एसोसिएट होगा. जो फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप है सीट इनवर्स की तरफ, उस अमीनो एसिड के ऊपर हाइड्राजीन आकर एसोसिएट नहीं होगा. सो आप देख सकते हैं हाइड्राजीन आकर इंटरनल पोजीशन पर इसके बाद भी लग रहा है, इस यानी R1 के बाद भी लग रहा है, Rn-1 के बाद भी लग रहा है, पर जो nth अमीनो एसिड है that is released as a free amino acid, and this free amino acids which is released from the hydrazinolysis could be injected into HPLC. इसको हम HPLC में इंजेक्ट कर सकते हैं और बाद में आइडेंटिफाई किया जा सकता है. ओके. तो यहां पर हमें पहले क्या करना है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उस पॉलीपेप्टाइड चेन को हाइड्राजीन से ट्रीट करना है. प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन में सारे इंटरनल पेप्टाइड बॉन्ड क्लीव होंगे, जो भी अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री होगा उसके साथ हाइड्राजीन जुड़ जाएगा. जो पहले से ही सी टर्मिनस पर अमीनो एसिड होगा उसका कार्बोक्सिल ग्रुप क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं होगा, इसलिए उसके साथ कोई हाइड्राजीन ग्रुप है वह आकर नहीं जुड़ेगा. सो नॉर्मल अमीनो एसिड and amino acyl hydrazides they could be easily recognized. Moving to next step, that is cleavage of a protein's disulfide bond. That it may be a case that two polypeptide chains which may be of similar kind, they may be linked by disulfide bond. इसलिए सीक्वेंसिंग करने से पहले इन दो पॉलीपेप्टाइड चेन को एक दूसरे से अलग करना जरूरी है. How we will identify that protein is a homodimer और a monomer? कल हम जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात कर रहे थे, तब हमने पता किया. लेकिन 1 मोल ऑफ प्रोटीन 2 मोल्स ऑफ एलेनिन देता है, उससे भी आपके पास समझ में आ जाएगा. डबल अमाउंट में एलेनिन मिलता है, तो इससे भी समझ में आना चाहिए कि जिस पॉलीपेप्टाइड की हम बात कर रहे हैं वह होमोडाइमर है. इवन देयर कुड बी अ हेट्रोडाइमर कंडीशन. एक तीसरा सबनेट यहां पर और हो सकती है. दिस मे बी अनदर काइंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. लेट्स से इट इज हैविंग अ methionine at its end terminus. And अगर कोई प्रोटीन लेट्स से इफ इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 डिफरेंट सबनेट्स या 3 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ जिसमें 2 आइडेंटिकल है और थर्ड वन इज डिफरेंट, देन व्हाट यू विल फाइंड इज 1 मोल ऑफ प्रोटीन, 1 मोल ऑफ प्रोटीन gives you a 2 moles of alanine and 1 mole of methionine. इससे पता चल सकता है कि एलेनिन वाली 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है और मिथ्योनिन वाली एक है. लेकिन जो एक से ज्यादा अगर पॉलीपेप्टाइड चेन है तो दे मे बी लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रेक द डाइसल्फाइड बॉन्ड. You have to utilize some kind of reducing agent.
एंड मोस्ट कॉमन जो रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है दैट इज 2-mercapto इथेनॉल, ऑल्सो रेफर टू एज बीटा मरकैप्टो इथेनॉल, जिसे बीटा मरकैप्टो इथेनॉल भी कहा जाता है। इन शॉर्ट बीटा ME लिखा जाता है। बिसाइड बीटा मरकैप्टोनॉल, in some cases we can utilize another reducing agent referred to as डाइथायोथ्रीटॉल, इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है, शॉर्ट में DTT हम उसको लिख। यहां पर आप देख सकते हैं डायग्राम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ है कि CH3CH2OH ये C2H5OH इथेनॉल है, और इथेनॉल के साथ अगर मरकैप्टो यानी SH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसे अब मरकैप्टो इथेनॉल कहा जाएगा। दैट इज अ SH ग्रुप एसोसिएटेड, सो इट इज रेफर्ड टू एज मरकैप्टो इथेनॉल। नाउ व्हाट कंडीशन कुछ इस तरीके की है कि देयर इज अ डाइसल्फाइड बॉन्ड, दैट इज यू कैन से दैट the polypeptide chains they are in a oxidized state, that is they are having a disulfide bond, while the beta mercaptanol is SH हाइड्रोजिनेटेड है, यानी ये रिड्यूस स्टेट में है। जैसे ही बीटा मरकैप्टनॉल का ट्रीटमेंट देते हैं तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन में सिस्टीन है उनके ऊपर अब हाइड्रोजिनेशन हो जाता है, यानी उसका तो अब क्या हो जाएगा, रिडक्शन, इसका हो गया रिडक्शन। और जो बीटा मरकैप्टोनॉल के दो मॉलिक्यूल्स आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ गए, यानी दे आर नाउ ऑक्सीडाइज्ड, वह ऑक्सीडाइज हो गया। जो बीटा मरकैप्टोनॉल खुद तो ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन उसने डाइसल्फाइड बॉन्ड को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया है, उस पर क्या करा दिया, सल्फा हाइड्रेशन करा दिया। अब पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक दूसरे से अलग हो सकती है, बट क्योंकि एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए देयर इज ऑलवेज अ चांस दैट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वापस डाइसल्फाइड बॉन्ड ना बन जाए। इसलिए मोस्ट ऑफन जब डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है, इट इज क्लीव्ड इन प्रेजेंस ऑफ एन आयोडोएसीटेट, जो कि फ्री सल्फा हाइड्राइल ग्रुप को अल्काइलेट कर देता है ताकि वापस डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन ना हो। सो जहां कहीं पर भी पॉलीपेप्टाइड चेन में लेट से सिस्टीन है, उसका सल्फा हाइड्रेशन हो चुका, फ्री सिस्टीन का R चेन, उसके ऊपर आयोडोएसीटेट कार्बोक्सी मिथाइल ग्रुप को ऐड करा देता, तो यहां से हाइड्रोजन हट जाएगा, यहां से आयोडीन हट जाएगा, यू विल गेट एन HI, और CH2CO- ग्रुप इट विल गेट अटैच टू दिस R chain of cysteine, that is you will get S carboxy methyl cellulose, and result of this is that now these cysteine R chain which is alkylated, they can not again form a disulfide bond, so disulfide bond formation could be prevented, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। देन नेक्स्ट स्टेप इन अ प्रोटीन सीक्वेंसिंग इज, जो पहला स्टेप था हमने स्टार्टिंग से देखा कि जो जिस प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं उस प्रोटीन का सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन है, वो कैसे पता करो, तो हम करें एन टर्मिनल एनालिसिस करो, सी टर्मिनल एनालिसिस करो। N terminus C terminus is same kind of amino acid or amines. It is a single polypeptide. If there are you are getting more than one type, means it is a heterogeneous mixture. उसके बाद हमने कहा कि अगर उसमें कहीं पर डाइसल्फाइड बॉन्ड है तो उसको भी ब्रेक डाउन करो। उसके बाद जो हमारे पास अब पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, पॉलीपेप्टाइड चेन हमारे पास आ चुकी है, प्यूरिफाइड पॉलीपेप्टाइड चेन। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि इसको हम सेपरेट करें, प्यूरिफाई करें और करेक्टराइज करें कि वो पॉलीपेप्टाइड चेन किस तरीके की। सो फर्स्ट ऑफन वी गिव अ टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट देते हैं, कुछ डीनेचुरेटिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं, जैसे यूरिया हो गया, ग्वेनेडिनियम क्लोराइड हो गया या ग्वेनेडिनियम आयन हो गया, यूरिया, ग्वेनेडिनियम आयन, इवन वी कैन यूटिलाइज SDS,
ऐसा करने पर जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वह इस तरीके, जितनी भी पॉलीपेप्टाइड चेन है वह इस तरीके से एन टर्मिनस से सी टर्मिनस डीनेचर्ड फॉर्म में, ये कोई एक पॉलीपेप्टाइड चेन हुई, ये फिर कोई दूसरे प्रोटीन है उससे कोई दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन हुई इस तरीके फॉर्म में। सो लेट्स से दिस इज सम सेकंड पॉलीपेप्टाइड चेन, इसको भी ऐसे कन्वर्ट किया जा सकता है। एंड दीज डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स, उनका जो सेपरेशन है that could be utilized by different chromatographic technique, that is for example you can go for an gel permeation, अगर आपको सेपरेशन साइज के बेसिस पर करना है, साइज के बेसिस के अलावा आयन एक्सचेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। so these are two routinely utilized chromatographic approaches, so gel permeation based या आयन एक्सचेंज बेस्ड HPLC टेक्निक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इन पॉलीपेप्टाइड चेन को सेपरेट किया जा सके, प्यूरिफाई किया जा सके। और मोस्ट ऑफन पॉलीपेप्टाइड्स का करेक्टराइजेशन करने के लिए उसका हम क्या करते हैं, मास डिटरमाइन करते हैं कि वो पॉलीपेप्टाइड चेन कितने किलो डाल्टन की है। मास को पता करने के लिए जो ट्रेडिशनल मेथड अब तक इस्तेमाल किया गया वो SDS पेज है, पर इसके अंदर 10% वेरिएशन मास में, जो कैलकुलेटेड मास है उसमें 10% वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं। पॉलीपेप्टाइड का मास बहुत ज्यादा इफेक्टिवली यानी ऑलमोस्ट 0.01% और लेस वेरिएशंस होंगे अगर आप जो मास डिटरमिनेशन है पॉलीपेप्टाइड चेन का, दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो मास पता कर पॉलीपेप्टाइड चेन को करेक्टराइज करके रखा जा सकता है। हम उस पॉलीपेप्टाइड चेन की बात कर रहे हैं जिसे हमें सीक्वेंस करना है। सो नाउ हमारे पास एक प्यूरिफाइड पॉलीपेप्टाइड अवेलेबल है। अब हमें इस प्यूरिफाइड पॉलीपेप्टाइड को सीक्वेंस करना है। प्यूरिफाइड पॉलीपेप्टाइड को सीक्वेंस करने के लिए जो हम मेथड इस्तेमाल करने वाले हैं दैट इज एन एडमेंस मेथड और एडमेंस डिग्रेडेशन मेथड। जो कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन है वह काफी बड़ी हो सकती है। complete polypeptide chains, so polypeptide chains these could be very large, N terminus से C terminus, this is a polypeptide chain. This polypeptide chain could be very large. Let's say it is approximately around 200 amino acid. So ओनली एडमेंस मेथड के अंदर अराउंड 40 to 100 मैक्सिमम, सो पेप्टाइड्स lesser than 40 amino acids are sequenced most precisely. Then methods has been improved to sequence even peptide in range of 40 to 100 amino acids, but larger than 100 amino acid sequencing is not reliable, फिर उस पर ज्यादा भरोसा नहीं है। सबसे तो बढ़िया इसको 40 अमीनो एसिड तक ही इस्तेमाल करो, उससे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लमेटिक है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉलीपेप्टाइड को कोशिश करें कि 40 अमीनो एसिड से छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाए, इस तरीके के फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाए। लार्जर पॉलीपेप्टाइड गेट कन्वर्ट इनटू सम स्मॉलर फ्रैगमेंट्स, एन टर्मिनस सी टर्मिनस, स्पेसिफिक फ्रैगमेंट्स जनरेट हुआ आपके पास। ऑब्वियसली ऐसा करने के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स
या एंजाइम इस्तेमाल करने पड़ेंगे, एंड मोस्ट ऑफन द एंजाइम्स व्हिच आर यूटिलाइज्ड आर सम काइंड ऑफ स्पेसिफिक एंडोप्रोटीज, किसी न किसी स्पेसिफिक तरीके के एंडोप्रोटीज का इस्तेमाल करते हैं। So what we do is we start with, instead of a complete polypeptide chain, we start with the fragments. Peptides fragments हमारे पास होने चाहिए, एंड दे शुड बी स्मॉल इनफ कि उनको हम 40 अमीनो एसिड या उससे भी कम होने चाहिए ताकि हम उसकी सीक्वेंस कर सकें। सम ऑफ मोस्ट कॉमनली यूटिलाइज्ड एंडोप्रोटेजेस आर, तो एंडोप्रोटेजेस हुआ होते हैं जो कि इन बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे। लेट्स से दिस इज अ सम amino acid sequence, this is the N terminus and this is the C terminus. These bonds are terminal bonds, let's say these bonds they are terminal bond. इनको एक्सोप्रोटीज कट करेगा, लेकिन बीच में जितने भी बॉन्ड्स हैं ये इंटरनल पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं और इनको क्लीव करने का काम एंडोप्रोटीज करेगा। सो दीज आर क्लीव्ड बाय एंडोप्रोटीज, सम काइंड ऑफ एंडोप्रोटीज विल क्लीव दीज बॉन्ड्स। अब वो कहां पर कट करेगा, किस अमीनो एसिड के बाद कट करेगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हम किस एंडोप्रोटीज की या एंडोपेप्टाइडेज की बात कर। इस किनारे वाले बॉन्ड को, इधर वाले बॉन्ड को कौन कट करेगा, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इस बॉन्ड को क्लीव करने का काम वुड बी परफॉर्म्ड बाय अमीनोपेप्टाइडेज, जो कि एक एक्सोप्रोटीज है, और इधर की तरफ से कट करने का काम करेगा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। सो टर्मिनल जो अमीनो एसिड्स हैं, उन टर्मिनल अमीनो एसिड्स को हटाने का काम, इन टर्मिनल अमीनो एसिड्स को हटाने का काम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज या अमीनो पेप्टाइडेज करता है। इंटरनल पोजीशन पर जितने भी बॉन्ड्स हैं उनको हटाने का काम एंडोप्रोटीज करता है। कुछ मोस्ट कॉमनली यूटिलाइज्ड जो एंडोप्रोटीज है, दे आर गिवन हियर इन अ लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल ट्रिप्सिन, याद रखना इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है और ये लाइसिन या आर्जिन यानी पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड के बाद ये कट करता है। सो यहां पर अगर N+1 पोजीशन पर N+1 पोजीशन पर इस जगह पर लाइसिन है या आर्जिनिन की आर्जिन है तो उसके बाद कट लगा देगा। ये हम nth अमीनो एसिड कह रहे हैं, उसे हम N-1। तो हम कह रहे हैं जहां कहीं पर भी लाइसिन या आर्जिनिन आ रहा है उसके बाद C टर्मिनस पर कट लगाता है। सो देयर इज अ C टर्मिनल क्लीवेज बाय द ट्रिप्सिन आफ्टर लाइसिन एंड आर्जिनिन। ध्यान रहे कि ये N शुड नॉट बी, ये प्रोलीन नहीं होना चाहिए, ये वाला अमीनो एसिड प्रोलीन नहीं होना चाहिए। लाइसिन आर्जिनिन के बाद अगर प्रोलीन आया तो लाइसिन आर्जिनिन होने के बाद भी कट नहीं लगेगा। इस तरीके से और याद रखा जा सकता है, कीमोट्रिप्सिन हैज अ इंटरमीडिएट स्पेसिटी, उसको अगर एक्ट करना है तो N-1 प्लेस पर फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन या टायरोसिन यानी एरोमेटिक अमीनो एसिड होना चाहिए और अगला अमीनो एसिड प्रोलीन नहीं होना चाहिए। अगर N-1 पर एस्पार्जिन, हिस्टिडीन, मिथ्योनिन, ल्यूसीन हो तो भी कट कर सकता है पर बहुत कम रेट से। सो मेनली यू कैन से कीमोट्रिप्सिन, इफ ट्रिप्सिन कट आफ्टर बेसिक अमीनो एसिड्स तो कीमोट्रिप्सिन कट्स आफ्टर एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। तो
elastase. It cut after the small R chain अमीनो एसिड्स, जो स्मॉल आर चेन अमीनो एसिड जैसे एलेनिन, ग्लाइसिन, सीरीन, वेलिन, उसके बाद कट करता है। पर वापस वही बात है कि इट शुड नॉट बी फॉलोड बाय प्रोलीन। ग्लाइसिन, एलेनिन, जो भी स्मॉल आर चेन, सीरीन, वेलिन है, उसके बाद प्रोलीन नहीं होना चाहिए। ये तीनों की तीनों दे आर कटिंग एट द सी टर्मिनस ऑफ दैट गिवन अमीनो एसिड, दैट इज गिवन अमीनो एसिड शुड बी एट n-1 पोजीशन, उसके बाद कट लगाएगा अमीनो एसिड के सी टर्मिनस साइड में। पॉलीपेप्टाइड के सी टर्मिनस की बात नहीं कर रहे हैं। जहां कहीं पर भी अमीनो एसिड आ रहा है, ये अमीनो एसिड सपोज इस जगह पर लाइसिन आ रहा है, तो ये लाइसिन इस अमीनो एसिड का खुद का एक एन टर्मिनस है और एक सी टर्मिनस, तो हम कह रहे हैं इधर की तरफ कट करेगा अगर ये एंजाइम कौन सा है, ट्रिप्सिन। सिमिलरली पेप्सिन, इट रिकॉग्नाइज ल्यूसीन, फिनलनीन, ट्रिप्टोफेन, टायरोसिन, लेकिन जनरली इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि ये pH 2 पर काम करता है, सो वेरी रेयरली यूटिलाइज्ड। Thermolysin is also there, pepsin is also there, some other endopeptide is also there, but at least you should remember these three protease. इन तीन को जरूर आप नोट डाउन कर लें, दैट इज ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, इलास्टेस। सो नोट डाउन कर लिया आपने? ओके, आगे बात करते हैं। देन so due to the use of these specific endoprotease, we can cut a large polypeptide into a short polypeptide, short enough that it could be sequenced using Edmonds degradation method. Now, as we have already seen that trypsin, it cuts peptide bond after positively charged residues, that is
lysine or arginine, but this should not be followed by proline. लाइसिन आर्जिनिन के बाद प्रोलीन नहीं होना चाहिए, और ये एंडोप्रोटीज है। इस सिंपल से कंसेप्ट पर भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेट्स से अगर आपके पास कोई एक सीक्वेंस दे दी गई, लेट्स से सम सीक्वेंस इज गिवन दैट देयर इज a k n d r p a k n e k k. Let's keep only one k. Okay, k. Or let's take one more k as well. So this is some peptide sequence. Now if question is, if it is cleaved by trypsin, then what are number of cleavage site and what will be number of fragments, कितने fragments generate होंगे. So this is the question. Now we must know कि ट्रिप्सिन क्लीव करता किसके बाद है या कहां पर कट करता है. तो we know that the recognition site for trypsin include either lysine, arginine, lysine, lysine, lysine. These could be recognized. And it cut or put a cleavage on the C terminal site. इधर की तरफ कट लगाएगा, इधर की तरफ कट लगाएगा. लेकिन हमें इस बॉन्ड को तो छोड़ देना चाहिए और इस बॉन्ड को भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये किनारे की बॉन्ड है. ना तो ये क्लीव हो सकता है, ना तो ये क्लीव हो सकता है, ना ये वाला बॉन्ड क्लीव हो सकता है. हालांकि यहां तो वैसे होगा भी नहीं, लाइसिन है, और यहां आर्जिनिन का प्रोलीन है, इसलिए ये भी कट नहीं होगा. इसलिए कितनी क्लीवेज साइट पीछे बची, तो यू विल सी दैट देयर इज दिस इज फर्स्ट क्लीवेज साइट जहां पर कट लग सकता है, एंड दिस इज द सेकेंड क्लीवेज साइट जहां पर कट लग सकता है. सो you will say that there are two cleavage sites. और क्योंकि एक लीनियर पेप्टाइड है, दो साइट्स है, तो तीन फ्रैगमेंट बन जाएंगे, 1 2 and 3. यू विल गेट 3 फ्रैगमेंट्स. याद रहे हमेशा आपको ये वाला बॉन्ड छोड़ना है, इधर वाला बॉन्ड भी छोड़ना है, क्योंकि ये एंडोप्रोटेज. और बीच में देखना है कि आर्जिनिन या लाइसिन के बाद कहीं प्रोलीन तो नहीं. ओके, यानी सपोज आपको वापस से कोई सीक्वेंस दे दिया कि के वी डी के ए एन आर पी आर एन, और पूछ लिया जाए कि what will be number of fragments after cleavage with trypsin. This may be another question. दिमाग लगाओ, आंसर बताओ.
सो व्हाट इज योर आंसर? 1 2 3 4. ओके, लेट्स सी, वेरीफाई योर आंसर. आपका आंसर चेक करते हैं. देखो, हमने कहा कि पहले इनको तो बॉन्ड्स को तो छोड़ ही देना चाहिए, इनको एक्सोप्रोटीज कट करेगा रिगार्डलेस ऑफ एनी काइंड ऑफ अमीनो एसिड, सो दे विल नॉट बी क्लीव्ड. अब हमारे पास काम के अमीनो एसिड बचा लाइसी और आर्जिनिन. ये तो चले गया क्योंकि ये कोई काम का नहीं है, ये भी चला गया, कोई काम का नहीं. नाउ देयर आर ओनली प्लेसेस, दीज आर द प्लेसेस, this is lice, these are the target site, but this is followed by proline, so again cut is not possible. So only cut is possible allowed at this site, सिर्फ इस साइट पर कट पॉसिबल है. और अगर साइट पर कट पॉसिबल है, if there is a single cleavage site, there is a one cleavage site, and क्योंकि ये लीनियर मॉलिक्यूल्स है, you will get two फ्रैगमेंट्स. अगर ये साइक्लिक होता, साइक्लिक के अंदर एक कट लगाते तो एक ही फ्रैगमेंट जनरेट होता. सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स जनरेटेड बाय अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ protease, endoprotease. Similarly, cyanogen bromide is a chemical which cleaves after a methionine residue. ये भी याद रखना बहुत जरूरी है. ये एंजाइम नहीं है, ये एक केमिकल है जो कि मिथियोनिन के बाद कट लगाता है. यानी अगर आपको कहा जाए ए वी एम एन ए वी के एम आर एन सी एम ए वी डी, ये कोई सीक्वेंस है, तो व्हाट विल बी नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स आफ्टर ट्रीटमेंट विथ साइनोजिन ब्रोमाइड. साइनोजिन ब्रोमाइड से ट्रीट करें तो कितने फ्रैगमेंट्स बनेंगे. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो क्लीवेज साइट इज मिथियोनिन. यू विल फोकस ऑन दीज मिथियोनिन. इस यहां पर कट लगेगा, इधर भी कट लगेगा और इधर भी कट लगेगा. टोटल there are three cleavage sites. There are three cleavage sites, and in other words, there would be formation of 4 different fragments. So basically, endoprotease या केमिकल का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि सारे स्मॉल फ्रैगमेंट्स हमारे पास बन जाए. You get some small fragments, small enough कि अब उन्हें हम एडमिन्स मेथड से सीक्वेंस कर सकें. तो एक बार हमारे पास स्मॉल फ्रैगमेंट्स आ गए, दीज स्मॉल फ्रैगमेंट्स इन नेक्स्ट स्टेप नोट डाउन इसको, अगर नहीं किया तो चलो कर लो वापस. सो नोट डाउन हो गया, चलो आगे बात कर लेते हैं. सो वंस यू गेट जो लार्ज पॉलीपेप्टाइड था हमारे पास,
उस लार्जर पॉलीपेप्टाइड को आपने क्लीव कर कर खूब सारे फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया. सो दीज आर लेट्स से फ्रैगमेंट्स. इन फ्रैगमेंट्स को देन यू सेपरेट बाय जेल परमिएशन where the separation is based on size, or you can go for a reverse phase chromatography जहां पर और better resolution होता है. So different polypeptides, now let's say this is a fragment A, B, C, D, they could be collected in a different tubes. ये अब हमने इनको different tubes में collect कर लिया. That is now we are having a fragments. अब इन different fragments की we are having a fragment, let's say A, B, C, D, they have been separated, they have been purified. अब हमें इन different fragments का क्या करनी है? Sequencing. So fragment की sequencing कैसे करते हैं हम पहले देख चुके हैं. Fragment की sequencing करने के लिए we will utilize this repetitive advanced degradation method. उसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप तो होता है कि जो पेप्टाइड है हमारे पास, एक शॉर्ट पेप्टाइड, लेट्स से दिस इज अ पेप्टाइड ए जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, ये पेप्टाइड ए है, लेट्स से हम उसके साथ काम कर रहे हैं, जिसके अंदर एन टर्मिनस पर अमीनो एसिड 1 है, अमीनो एसिड 2 है, अमीनो एसिड 3 है, अमीनो एसिड 4 है एंड सो ऑन. इस तरीके से एन नंबर ऑफ अमीनो एसिड. उसके कार्बोक्सिल टर्मिनस को एड्सॉर्ब ऑफन कर लेते हैं किसी न किसी एड्सॉर्बेंट सरफेस के साथ, किसी न किसी एड्सॉर्बेंट सरफेस के साथ उसको एड्सॉर्ब कर देते हैं. एड्सॉर्बेंट सरफेस जो मोस्ट ऑफन इस्तेमाल की जाती है दैट इज अ पॉलीविनाइलिडीन फ्लोराइड, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, दैट इज PVDF. और वी कैन यूटिलाइज अ glass beads or more accurately glass fibers because they will provide more surface area. Glass fibers which is treated with polybrine. इस तरीके के मटेरियल बहुत बढ़िया एड्सॉर्बेंट की तरह काम करते हैं. सो इस तरीके से हमारे पास ये सेम पॉलीपेप्टाइड चेन की सेकंड कॉपी है, इस तरह से खूब सारी मल्टीपल कॉपी ऑफ सेम पॉलीपेप्टाइड चेन दे हैव बीन एड्सॉर्ब्ड. A1, A2, A3, A4, multiple copies of a same polypeptide chain, it has been adsorbed. बाकी हम मेथड पढ़ चुके हैं. फर्स्ट स्टेप में हम फिनाइल आइसोथायोसाइनेट का ट्रीटमेंट देंगे. एन टर्मिनस पर जो भी फ्री अमीनो ग्रुप होगा उसके साथ फिनाइल आइसोथायोसाइनेट है वह जाकर बाइंड हो जाएगा. फिर उसके बाद किसी एनहाइड्रस एसिड का ट्रीटमेंट देंगे. एनहाइड्रस एसिड फॉर एग्जांपल ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड और एनहाइड्रस एसिड का ट्रीटमेंट देने पर जो भी अमीनो एसिड हमारे किनारे पर होगा वह रिमूव किया जा सकता है. रिमूव करने पर अब यहां से ये अमीनो एसिड सब जगह से दूर हो जाएगा. किनारे पर अब वापस कौन सा अमीनो एसिड आ जाएगा, सेकंड वाला, बिकॉज फर्स्ट अमीनो एसिड हैज बीन रिमूव्ड. अब सभी जगह पर टर्मिनस पर सेकंड अमीनो एसिड आ गया. अमीनो एसिड 1 रिलीज हो गया इन फॉर्म ऑफ सम केमिकल इसके साथ जुड़ा हुआ है. इट हैज बीन रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ so it is being released in form of thiazolinone डेरिवेटिव. thiazolinone डेरिवेटिव के फॉर्म में ये निकल गया. इसको थोड़ा सा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में रखा या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में रखने पर ये थोड़ा स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जिसे हम फिनाइल थायोडेंटोइन PTH अमीनो एसिड कहेंगे. और इस PTH अमीनो एसिड को हम HPLC में इंजेक्ट कर कर पता कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा अमीनो एसिड था. तो जो भी अमीनो एसिड 1 खूब सारी कॉपीज हमारे पास यहाँ से रिलीज हुई है. मोस्ट ऑफ देम दे आर इन फॉर्म ऑफ thiazolinone derivatives.
HPLC में पहले ही हमने 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स को रन करके रखा हुआ है, उन सबका हमारे पास उन 20 अमीनो एसिड्स के जो थायोडेंटोइन डेरिवेटिव्स है उनका रिटेंशन टाइम हमारे पास पता है। इस अननोन अमीनो एसिड का रिटेंशन टाइम जिस अमीनो एसिड से मैच होता है वह इसकी आइडेंटिटी हो जाएगा। फिर सेकेंड साइकिल के लिए अब वापस हम सेम फर्स्ट स्टेप पर जाएंगे। अब वापस हम PITC का ट्रीटमेंट देंगे, फिर एनहाइड्रस एसिड का ट्रीटमेंट देंगे। अब जो सेकंड अमीनो एसिड है वह रिलीज होगा, उसको HPLC में इंजेक्ट करेंगे और उसके बाद उसको हम पता कर लेंगे। तो इस तरीके से N टर्मिनस से C टर्मिनस एक एक कर हम सभी अमीनो एसिड को, सेकंड अमीनो एसिड कौन सा है, थर्ड अमीनो एसिड कौन सा है, वह पता करेंगे। तो 1 अमीनो एसिड, सेकेंड, थर्ड, इस तरीके से पूरे अमीनो एसिड को एक एक कर पता कर लेंगे। नाउ जैसे हमने कहा कि इस प्रोसीजर में प्रॉब्लम यह है कि जब हम सेकंड अमीनो एसिड को निकालते हैं सब जगह से, तो जरूरी नहीं कि हर जगह से अमीनो एसिड सेकंड हटे ही हटे। कुछ जगहों पर अमीनो एसिड सेकंड हो सकता है क्लीव ही ना हो, क्योंकि 100% आप केमिकल रिएक्शंस नहीं करा सकते। और नेक्स्ट राउंड के अंदर जब आप थर्ड अमीनो एसिड को क्लीव कर रहे हो, उस दौरान सेकंड अमीनो एसिड भी निकलकर बाहर आ सकता है। ऑल्दो बहुत कम जगहों से सेकंड अमीनो एसिड बाहर आएगा, लेकिन कंटामिनेटिंग अमीनो एसिड वुड बी देयर। इस तरीके से जैसे से आप स्टेप बाय स्टेप 40 स्टेप्स या उससे और आगे बढ़ते जाएंगे, जब आप 40th अमीनो एसिड को बाहर निकाल रहे हैं, उस दौरान 39th अमीनो एसिड भी कुछ जगहों से बाहर आ रहा होगा, 38th अमीनो एसिड भी जो पीछे छूट गया वो बाहर आ रहा होगा। बहुत ज्यादा HPLC में बैंड आने शुरू हो जाएंगे और प्रेसिशन के साथ उसको डिटेक्ट करना मुश्किल होगा। इसलिए ऑफन वी से दैट एडवांस्ड डिग्रेडेशन मेथड इज मोर सुटेबल फॉर अ शॉर्ट और स्मॉल पेप्टाइड। तो हमारे पास जो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स थे, इसकी भी हमने अब सीक्वेंस कर ली, इसकी भी हमने एडवांस्ड डिग्रेडेशन मेथड से सीक्वेंस कर ली, थर्ड की भी सीक्वेंस कर दी, फोर्थ की, 4 अलग अलग जो फ्रेगमेंट्स थे उनको प्यूरिफाई किया और एडवांस्ड डिग्रेडेशन मेथड का इस्तेमाल कर उनकी सीक्वेंसिंग कर ली। नाउ हमारे पास सीक्वेंस आ तो गई, अब उनको अलाइन कैसे करें। तो अब हम क्या करते हैं, जिस पॉलीपेप्टाइड की हमें सीक्वेंस करनी थी उसको सेम पॉलीपेप्टाइड चेन को, हमारे पास उस पॉलीपेप्टाइड चेन की खूब सारी कॉपीज है, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, हमारे पास उस तरीके की खूब सारी कॉपीज अवेलेबल है। वी आर हैविंग अ मल्टीपल कॉपीज ऑफ दीज पॉलीपेप्टाइड चेन। सो इन जो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, इसको हम पहले लेट्स से साइनोजन ब्रोमाइड से ट्रीट किया और हमारे पास जो फ्रेगमेंट्स आए, कोई फ्रैगमेंट A आया, कोई फ्रैगमेंट B आया, कोई फ्रैगमेंट C आया, उनकी हमने सीक्वेंसिंग सेम पॉलीपेप्टाइड चेन को अब हम एक सेकंड प्रोटीएज से लेट्स से ट्रिप्सिन से ट्रीटमेंट किया। ऑब्वियसली ट्रिप्सिन की क्लीवेज साइट कुछ अलग हुई, साइनोजन ब्रोमाइड मिथियोनिन के बाद कट करता है, तो ट्रिप्सिन और लाइसिन और आर्जिनिन के बाद कट करता है। अब हमारे पास जो भी फ्रैगमेंट्स बनेंगे ट्रिप्सिन डाइजेस्टेड फ्रैगमेंट, उनकी सीक्वेंसिंग भी कर लेंगे। लेट्स से उससे कोई हमारे पास फ्रैगमेंट वापस A बना, कोई फ्रैगमेंट B बना, उनकी भी हमने वापस सीक्वेंसिंग की। तो इन फ्रैगमेंट्स की भी हमने सीक्वेंसिंग की, सेम पॉलीपेप्टाइड चेन की हमने दूसरी बार वापस सीक्वेंसिंग की। सो व्हाट आई वांट टू से इज दैट सेम पॉलीपेप्टाइड चेन, नाउ इट इज क्लीव्ड विद अ second time it is cleaved with another protease। जो हमारे पास फ्रैगमेंट्स आए हैं, इन फ्रैगमेंट्स को हमने सेपरेट किया और इन फ्रैगमेंट्स की हमारे पास अमीनो एसिड सीक्वेंस आ गई। सो अब हमारे पास 2 अलग अलग जगहों से इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब हमारे पास जो सीक्वेंस इधर से A B C वाली फ्रैगमेंट की सीक्वेंस इधर से साइनोजन ब्रोमाइड साइड से आई लेट से, और ट्रिप्सिन डाइजेस्टेड फ्रैगमेंट से हमारे पास A B और C वाली फ्रैगमेंट्स आए। अब हमें क्या करना है, इनको आपस में ऑर्गेनाइज ओवरलैप कर कंप्लीट सीक्वेंस है वह डिटरमाइन करनी। सो बाय कंपेयरिंग द डाटा और सीक्वेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेस वी कैन प्रेडिक्ट द ओवरऑल सीक्वेंस ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन। सो हाउ टू ऑर्गेनाइज दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर के लिए कि लेट्स से हमारे पास ये कोई एक सीक्वेंस है, फिनाइलैलानाइन, ट्रिप्टोफैन, मिथ्योनिन, ग्लाइसिन, ये पूरी एक सीक्वेंस है। इसको अगर हम साइनोजन ब्रोमाइड से कट करें तो इस जगह पर कट लगेगा, साइनोजन ब्रोमाइड मिथ्योनिन के बाद कट करता है। 2 जगहों पर हमारे पास 3 फ्रैगमेंट बन जाएंगे, 1 2 एंड 3 फ्रैगमेंट्स, यू विल गेट 3 फ्रैगमेंट्स लाइक दिस।
you will get one largest fragment would be of this glycine, alanine, lysine, leucine, proline, methionine. Another fragment would be aspartic acid, glycine, arginine, cysteine, alanine, glutamine. Another is phenylalanine, tryptophan, methionine. All three fragments, they have been separated according to size. And if same polypeptide chain is cleaved by trypsin, trypsin cut after lysine or arginine, now you get a three fragments, 1, 2 and 3. That is, this is one of the fragment. What you will get is leucine, proline, methionine, aspartic acid, glycine and arginine. This would be the first fragment. And another fragment what you are going to get is a cysteine. This is the first fragment, this is the second fragment, this is the third fragment. Third fragment what you are going to get is cysteine, alanine and glutamine. Three fragments, they write it over here so as to avoid confusion. Cysteine, alanine and glutamine. So these are the three fragments what you are going to obtain over here. Now what is, these are the two possibilities. हर फ्रैगमेंट की आपने सीक्वेंस कर दी, और यानी जो साइनोजन ब्रोमाइड डाइजेस्टेड फ्रैगमेंट है, ट्रिप्सिन डाइजेस्टेड फ्रैगमेंट है, उनसे आपके पास, अब भूल जाएं ओरिजिनल पॉलीपेप्टाइड की क्या सीक्वेंस थी, अब यहां से आपने फ्रैगमेंट्स किया, उन फ्रैगमेंट्स की सीक्वेंस पता की कुछ इस तरीके से, ग्लाइसिन, एलेनिन, लाइसिन, ल्यूसिन, प्रोलिन, मिथ्योनिन. जो ट्रिप्सिन डाइजेस्टेड डाटा है उससे हमारे पास तीन वापस फ्रैगमेंट्स आए, 1, 2 एंड थर्ड फ्रैगमेंट इज सिस्टीन, एलेनिन, लेट्स से ग्लूटामिन. तो तीन फ्रैगमेंट यहां से है, ये गलती से यहां पास में लगा हुआ रह गया, ठीक है, वी रिमूव दिस. नाउ वी हैव टू मेक अ कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस. तो हम कैसे पता करें? एक बात तो क्लियर है कि साइनोजन ब्रोमाइड मिथ्योनिन के बाद कट करता है, किनारे पर ग्लूटामिन कैसे है, इसका मतलब ये सेकंड फ्रैगमेंट शुड बी एट द टर्मिनस. या इधर की तरफ से बात करें कि ट्रिप्सिन, लाइसिन या आर्जिन के बाद कट करता है, किनारे पर ग्लूटामिन कैसे, इसका मतलब ये ग्लूटामिन वाला फ्रैगमेंट शुड बी एट द टर्मिनस. लेकिन फिर भी कंप्लीट ओवरऑल सीक्वेंस कैसे पता करें? तो उसके लिए पहले हम लेट्स से इधर से कोई एक सीक्वेंस ले लेते हैं, दैट इज ग्लाइसिन के बाद कंफर्म है कि एलेनिन है, और एलेनिन के बाद कंफर्म है कि लाइसिन है, और लाइसिन के बाद कंफर्म है ल्यूसिन है, और ल्यूसिन के बाद कंफर्म प्रोलिन है, और प्रोलिन के बाद कंफर्म मिथ्योनिन. ये तो हमें कंफर्म है, ये सीक्वेंस इंटैक्ट है. जैसे यहां पर सीक्वेंस है, जिस ऑर्डर में यहां पर अमीनो एसिड की सीक्वेंस है, ऐसी सीक्वेंस यहां पर कहीं ना कहीं तो मैच होनी चाहिए, क्योंकि सेम पॉलीपेप्टाइड के ही फ्रैगमेंट्स. तो हियर यू कैन सी दैट ल्यूसिन, प्रोलिन एंड मिथ्योनिन दे आर कमिंग टुगेदर. तो इधर से जो डाटा आ रहे हैं उसको लेट्स से, उसके लिए मैंने कुछ अलग कलर इस्तेमाल कर लिया. यहां पर मैंने लिखा ल्यूसिन, प्रोलिन, मिथ्योनिन, उसके आगे अमीनो एसिड कौन सा आ रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली एस्पार्टिक एसिड और ग्लाइसिन और आर्जिनिन. ये सीक्वेंस तो साथ में है. इसका मतलब इस फ्रैगमेंट के साथ जो पर ग्लाइसिन, एलेनिन, लाइसिन, ल्यूसिन, प्रोलिन, मिथ्योनिन वाला फ्रैगमेंट है, उसके अगला फ्रैगमेंट डेफिनेटली कुछ इस तरीके का है जिसके पहला एस्पार्टिक एसिड आना चाहिए, फिर ग्लाइसिन आना चाहिए, फिर आर्जिनिन आना चाहिए. और ऐसा कौन सा फ्रैगमेंट है? सेकंड वाला. और आर्जिनिन के बाद क्या आ रहा है फिर? इसका मतलब सिस्टीन, एलेनिन एंड ग्लूटामिन आ रहा है. इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से फ्रैगमेंट अलाइन होना चाहिए. इसका मतलब कंक्लूजन इधर से भी ये कह सकते हैं कि यहां तक तो ये फ्रैगमेंट साथ में है, इसके बाद अगला जो कुछ भी फ्रैगमेंट आना चाहिए उसमें सीक्वेंस क्या होनी चाहिए? सिस्टीन, एलेनिन, ग्लूटामिन, कम से कम इतनी सीक्वेंस जरूर होनी चाहिए. और इतनी सीक्वेंस सेकंड इस वाले फ्रैगमेंट में, और दोनों फ्रैगमेंट यहीं पर खत्म हो गए, मतलब ये एक एंड आ चुका है. तो इस एंड पर जो भी फ्रैगमेंट आ रहा है इसका अंदर डेफिनेट हमसे यहां से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इधर की तरफ लाइसिन होना चाहिए, एलेनिन होना चाहिए और ग्लाइसिन होना चाहिए. जो भी हम इधर से फ्रैगमेंट हम लेने वाले हैं, इसको हम रेड कलर वालों से इस्तेमाल कर रहे हैं. ये फ्रैगमेंट हम ले चुके हैं, ये ले चुके हैं, पीछे एक ही फ्रैगमेंट बचा. इसके किनारे पर आप देख रहे हैं क्या आ रहा है? ग्लाइसिन, एलेनिन और लाइसिन. इसका मतलब इससे पहले क्या होना चाहिए? इससे पहले सीक्वेंस होनी चाहिए मिथ्योनिन, उससे पहले होनी चाहिए ट्रिप्टोफैन, और उससे पहले होनी चाहिए phenylalanine. So this should be like this. It means definitely a fragment which is prior to this, it must have
at least methionine, tryptophan and phenylalanine. This is this fragment, and it is also terminating at the same site, or if both the fragments they are terminating same site, that it means we have reached to another end of a polypeptide chain. So in this way हम complete polypeptide की sequence है वो determine कर पा रहे हैं. Got it? So again we can conclude the results that this is the intact polypeptide chain, and that's why cyanogen bromide से कट करने के बाद हमारे पास 1, 2 and 3 fragments आ रहे थे. ट्रिप्सिन से कट करने के बाद 1, 2 and 3 fragments were being obtained. So in this way we go for a protein sequencing. So पहले short fragments, फिर short fragments जो two different sources से है उनको overlap कर complete sequence determine कर सकते हैं. Now कई बार हमें डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की पोजीशन भी पता करनी हो सकती है कि लेट्स से ये एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है और इस पॉलीपेप्टाइड चेन विद इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन यहां पर डाइसल्फाइड बॉन्ड था, या दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं उनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड हो सकता है. इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड इज पॉसिबल एज वेल एज इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड इज आल्सो पॉसिबल. इस तरह की कुछ दोनों में से कुछ भी कंडीशन हो सकती है. डाइसल्फाइड बॉन्ड कुड बी देयर इंट्रा चेन एज वेल एज इंटरचेन. वो पता कैसे करें? तो डाइसल्फाइड बॉन्ड की पोजीशन को पता करने के लिए व्हाट वी ऑफन डू इज वी ट्रीट प्रोटीन with protease in absence of बीटा मरकैप्टोइथेनॉल. उसका क्या फायदा होगा उसको समझने के लिए कि लेट्स से ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन है. लेट्स से दीज आर टू पॉलीपेप्टाइड चेन और इसके अंदर यहां पर कोई डाइसल्फाइड बॉन्ड है और इस जगह पर कोई डाइसल्फाइड बॉन्ड है. लेट्स से यहां पर एक और डाइसल्फाइड बॉन्ड है. दीज आर टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स और टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स को हमने रिड्यूसिंग एजेंट का ट्रीटमेंट नहीं दिया, डायरेक्टली प्रोटीएज का ट्रीटमेंट दिया. उससे क्या होगा? प्रोटीएज की जो कुछ भी साइट होगी उस जगह पर कट लग जाएगा. सपोज ने यहां पर कट लगा दिया, यहां पर कट लगा दिया, प्रोटीएज ने इस जगह पर लेट्स से कट लगा दिया, यहां पर वापस कोई कट लगा दिया, इस जगह पर कट लगा दिया. सो दीज आर प्रोटीएज क्लीवेज साइट. हमारे पास ये फ्रैगमेंट ए बन गया, ये फ्रैगमेंट बी, ये फ्रैगमेंट सी, यहां पर कोई फ्रैगमेंट डी आ गया, ये कोई फ्रैगमेंट ई आ गया, ये कोई फ्रैगमेंट एफ आ गया और ये फ्रैगमेंट जी आ गया. अगर हम बीटा मरकैप्टोइथेनॉल का ट्रीटमेंट देने के बाद फिर प्रोटीएज का ट्रीटमेंट देते तो ए टू जी 7 डिफरेंट फ्रैगमेंट्स ऑब्टेन होते. लेकिन विदाउट बीटा मरकैप्टोइथेनॉल का ट्रीटमेंट देने पर क्या होगा? आपके पास ए फ्रैगमेंट और ई फ्रैगमेंट आपस में साथ जुड़कर आएंगे बिकॉज दे आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड. सिमिलरली बी फ्रैगमेंट अलग आएगा क्योंकि इंटैक्ट है, बट अगेन सी फ्रैगमेंट एंड एफ फ्रैगमेंट दे आर एक्सपेक्टेड टू कम टूगेदर बिकॉज दे आर लिंक्ड बाय सी फ्रैगमेंट एंड एफ फ्रैगमेंट. दे विल ऑल्सो कम टूगेदर. ए फ्रैगमेंट एंड ई फ्रैगमेंट विल ऑल्सो कम टूगेदर. While B fragment would be separate, you will get a separate D fragment, you will get a separate G fragment. So instead of 7 different bend, you may see only 5 bends. जो 5 different profiles हैं उनको, जिसको हम कह सकते हैं फर्स्ट में ये कलेक्ट कर लिया, सेकंड में ये आ गया, थर्ड ट्यूब में ये कलेक्ट कर लिया, फोर्थ में सपोज ये कलेक्ट कर लिया, फिफ्थ में ये आपने कलेक्ट कर लिया थ्रू जेल परमेशन और HPLC एनीथिंग. उसके बाद हर ट्यूब को अगर आप अब बीटा मरकैप्टोइथेनॉल का ट्रीटमेंट देते हैं तो इस वायल 1 और वायल 5 के अंदर यू विल गेट 2 फ्रैगमेंट्स ए एंड ई, एंड दिस यू विल गेट इन फर्स्ट vial. From the 5th vial you also will get 2 fragments C and F.
while in the vial 2, vial 3 and vial 4 you will get only one fragment. The vials in which you are getting only one fragment, it means these fragments, they were not involved in a disulfide bond with any other fragment. While wherever you are getting a two fragments from one peak after treatment with beta mercaptan, it means these two fragments which you are obtaining here, they were linked by a disulfide bond. And in this fragment, there may be, if there is only one cysteine, then these two cysteines, they were involved in disulfide bond. But if there are more than one cysteine, let's say इस fragment में there are two cysteine and here there is only one cysteine, तो अब ये disulfide bond बना रहा था या ये बना रहा था, ये पता कैसे करें? तो जैसा हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, break the disulfide bond in presence of an iodoacetate so that those sulfur hydryl group जो disulfide bond फॉर्मेशन पार्टिसिपेट कर रहे थे वो अल्काइलेट हो जाए. तो अल्काइल ग्रुप जहां लगा हुआ होगा, इसका मतलब दैट पर्टिकुलर सिस्टीन्स दे वर इन्वॉल्वड इन डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन. तो टू अंडरस्टैंड दिस, लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल. एक एग्जांपल लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं. हमारे पास लेट्स से ये कोई 30 रेसिड्यू की पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसको हम सीधा ट्रिप्सिन से कट करते हैं. किससे कट कर रहे हैं हम? ट्रिप्सिन से. हमें सीक्वेंस पता नहीं करनी है, सीक्वेंस इज गिवन. सो सीक्वेंस इज गिवन. ऑब्वियसली जब ट्रिप्सिन से कट करेंगे तो ट्रिप्सिन जहां कहीं पर भी आर्जिनिन होगा या लाइसिन होगा उसके बाद, और दैट शुड नॉट बी फॉलोड बाय प्रोलीन, तो जहां कहीं पर भी लाइसिन या आर्जिनिन होगा उन जगहों पर ये कट करने की कोशिश करेगा. लाइसिन के बाद यहां कट हो सकता है, कट लगा दे, आर्जिनिन के बाद कट लगा दे, वापस आर्जिनिन के बाद कट लगा दे, हो सकता है इस लाइसिन के बाद कट लग जाए, इस लाइसिन के बाद, एंड सो ऑन. एंड all fragments should get detached if there is no disulfide bond, but if there is somewhere disulfide bond, then those fragments जो disulfide bond जो साथ में आ रहे हैं, definitely those fragments should be linked by disulfide bond. समझने के लिए कि इसको कट करने पर हमारे पास सिर्फ 4 पीक ही आए, 4 डिफरेंट बैंड्स आए. 4 बैंड्स को हमने 4 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया. सो हमारे पास खूब सारे फ्रेगमेंट्स आने चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं. हमारे पास सिर्फ आने तो कितने चाहिए, इसके बाद एक यहाँ पर 2 सेकंड आना चाहिए, थर्ड आना चाहिए, फोर्थ आना चाहिए, फिफ्थ आना चाहिए, 6 पीक्स आने चाहिए, पर 6 पीक्स नहीं आया हमारे पास, 4 पीक्स ही आए. और इन 4 डिफरेंट पीक्स को हमने ट्रिप्सिन डाइजेशन करने के बाद 4 डिफरेंट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया, जिसको हम नाम दे रहे हैं ABCD. So at some places the polypeptide chains they could be still linked by disulfide bond, and there may be some cases जहां पर सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन. अब हमने क्या किया, हर ट्यूब के अंदर हमने बीटा मरकैप्टनथोल का ट्रीटमेंट दिया, ताकि अगर किसी वायल के अंदर अगर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, इफ एनी वायल हैज 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, दे मस्ट गेट सेपरेट. एंड दिस वाज डन इन प्रेजेंस ऑफ आयोडोएसिटेट्स. पर्पस इज दैट कि सेलेक्टिवली सिस्टीन रेसिड्यूज जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको अल्काइलेट कर सकें. तो जो कोई भी सिस्टीन डाइसल्फाइड बॉन्ड में इन्वॉल्व थे वह क्या हो जाए, अल्काइलेट हो जाए. दैट इज आवर पर्पस. सो यू ऑब्टेन दीज सीक्वेंस. जो लेट्स से ट्यूब 1 में हमें नहीं पता कितनी पेप्टाइड है, जो भी हमारे पास यहां पर रिजल्ट्स थे, ए से हमारे पास एक ही पेप्टाइड आई सीक्वेंस करने पर, एंड दैट इज AEK. बी के अंदर यू गेट 2 डिफरेंट बेंड्स. One cysteine which is alkylated. Alkylated means this was involved in disulfide bond, EPGYR, and it was involved in disulfide bond with another fragment which is having sequence WCSPPK of this. This cysteine is alkylated means this was involved in disulfide bond. Similarly, जो आपके पास थर्ड जो ट्यूब है उसमें भी there are 2 fragments, and fourth ट्यूब के अंदर there is 1 fragment. But one fragment में there are 2 cysteine, and both these cysteine they are alkylated. It means definitely it is sure that these 2 cysteines they were involved in disulfide bond. So if someone asks you what would be the sequence, so how we will make the sequence? Sequence हम किस तरीके से produce करेंगे? So first step कि we have to identify where this is lying. ये CEPGYR है कहां पर, तो
ये यहाँ पर कहीं पर है CEPGYR in a sequence is somewhere here, means this is the CPEGYR sequence. And where is WCSPPK? This is WCSPPK. It means these two, this cysteine, because this cysteine is alkylated, and this cysteine, they were definitely involved in disulfide bonds. ये आपस में disulfide bond से associated. Similarly, we can go for another condition, that is CEHFR. Where it is this? So this is here, CEHFR के साथ आ रहा है. With this we are observing CGGK. This is the CGGK. It means again this cysteine was involved in disulfide bond with this particular cysteine. इस cysteine के साथ ये disulfide bond में involved था. अब D segment में one more, what you observe is CEAFC. So this is the CEAFC, and you can see that it is alkylated twice. It means probably this cysteine is forming a disulfide bond with this cysteine, and AEK, this fragment is not involved in any kind of disulfide bond. In this way we can locate the positions of the disulfide bonds. Disulfide bonds की हमने positions को यहाँ पर पता कर लिया. It's very simple. The fragments which are coming together, definitely they were linked by disulfide bond in a primary sequence. और उस में भी कौन सा cysteine, which cysteine is involved? Obviously the cysteine would get alkylated. So this is how you identify the sequence of a protein. Although there is one more method, mass spectroscopic method, that we will study later on.